that from anybody else. Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालहू की जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, रहमान है, रहीम है, कुद्दूस है, इज़्ज़त अता करने वाला, रिज़्क़ अता करने वाला, ज़िंदगी और मौत का मालिक है, शारक से ज़्यादा करीब है। करोड़ों दुरूद व सलाम नबी मोहतरम नूर मुजस्सम शफ़ील मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में जो पूरी कायनात के लिए रहमत लिल आलमीन है, ख़ातमुन नबिय्यीन है और हमारी जानों पर हमसे ज़्यादा हक़ रखती हैं। अल कुरान के साथ आपका मेज़बान आबिद हुसैन मुस्तफ़ाई आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हम गुफ्तगू करेंगे अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त और अज़मत क्या है। हर शख्स इज़्ज़त का मुतमन्नी है और हर शख्स ये चाहता है कि उसे इज़्ज़त, रिफ़त और अज़मत हासिल हो, मगर इस बात की तरफ बहुत से कम लोगों का रुझान होता है कि इज़्ज़त असल में कहते किसी हैं। हर एक ने अपनी अपनी तौर पर इज़्ज़त की डेफिनेशन बना रखी है, लेकिन इसका जो असल असूल है और इसका हुसूल है वो कहाँ से मिलता है, कहाँ से इज़्ज़त के ताज पहनाए जाती हैं, उसको हमें देखना है। अमूमी तौर पर ज़माने की रवश और ख़यालात की तब्दीली में ऐसे अफराद भी मौजूद हैं जो ज़िल्लत को इज़्ज़त समझते हैं और इज़्ज़त को माशाल्लाह ज़िल्लत समझती हैं। तो इस वास्ते हमें ये जानना है कि असल इज़्ज़त क्या है और कहाँ से हमें हासिल होती है। अगर हम कुरान का मुताला करें या अहदीस का मुताला करें तो हमें ये बात वाज़ेह नज़र आती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही पूरी कायनात को इज़्ज़तें अता करता है और अगर किसी को ज़िल्लत मिलती है तो वो भी उसी की तरफ से होती है। यानी वो चाहे तो अदना को अल्लाह बना देता है, ज़र्रे को आफ़ताब बना देता है, वो चाहे तो कांटे को गुलाब बना देता है, वो चाहे तो फ़कीर को बादशाह बना देता है, वो चाहे तो गरीब को अमीर बना देता है। सारी इज़्ज़तें, सारी रिफ़ातें, सारी अज़मतें और सारा वक़ार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालहू के
पास ही है, क्योंकि वो खुद इज्जत वाला है। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून, क्योंकि वो खुद बड़ा पाक है, इज्जत वाला है, उसका कोई भी शरीक नहीं है। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान के अंदर आयत नंबर 26 में इरशाद फरमाया, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की, फरमा दीजिए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ही सारे मुल्कों का मालिक है, शहंशाह है। तो तिल मुल्क का मंतशा, जिसे चाहता है मुल्क अता कर देता है और जिसे चाहता है मुल्क छीन लेता है। व तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा, जिसे चाहता है इज़्ज़तें अता कर देता है और जिसे चाहता है ज़िल्लतें दे देता है। बियदिकल खैर, सारी भलाइयाँ मेरे अल्लाह के पास हैं। इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक वो हर चीज़ पर कादिर है। कुरान पाक की इस आयत मुक़द्दसा से ये बात हमें वाज़े तौर पर मालूम होती है कि तमाम इज़्ज़तें, तमाम रिफ़ातें, तमाम अज़मतें सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालू की अता करता है और उसी के हाथ में है। कोई शख्स अपने तौर पर अल्लाह के चाहे बग़ैर इज़्ज़त हासिल करना चाहे तो वो हासिल नहीं कर सकता, ना ही उसको इज़्ज़त मिल सकती है। अगर इज़्ज़त लेनी है तो वो अल्लाह की बारगाह में तलब करनी पड़ेगी। इज़्ज़त का जो लग़वी माना हमें मिलता है वो है क़ुव्वत, शिद्दत और ग़लबा। जिसके पास इज़्ज़त होती है तो ज़ाहिर बात उसके पास क़ुव्वत होता है और उसके पास शिद्दत होती है और ग़लबा पावर होती है। उर्फ़ी तौर पर इज़्ज़त को अज़मत के मुतरादिफ समझा जाता है और ये मानवी लिहाज से भी तकरीबन करीब करीब है। और हमारी गुफ्तगू का महवर भी यही है कि इज़्ज़त बमाना अज़मत और रिफ़ात, किस अंदाज में इंसान को अज़मत और किस अंदाज में इंसान को वक़ार हासिल होता है और किस अंदाज में इंसान को रिफ़त मिलती है और किस तरह इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ये अज़मतें अता करता है और किस तरह इंसान को महफूज करनी चाहिए, इसके हवाले से हम चंद अहदीस और आयात पढ़ेंगे। अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यतूफ़ु बिल काबती व यक़ूलु, रसूलुल्लाह काबा शरीफ का तवाफ़ फरमा रहे थे और काबा को मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाया कि तेरी खुशबू बहुत प्यारी है, तुझे अल्लाह ताला ने बड़ी अज़मत अता की है, हर अल्लाह का महबूब बंदा तेरी तरफ आता है, तेरा तवाफ़ करता है और इसके अलावा फ़रिश्ते भी तेरे इर्द गिर्द तवाफ़ करने के लिए आते हैं। बड़ी अज़मत है, बड़ा मुकाम है, इब्राहीम ने तुझे तामीर किया है, इस्माईल ने तुझे तामीर किया है और ये तू अल्लाह ताला का घर है, बड़ी अज़मत है। लेकिन एक मोमिन की जान, मोमिन का खून तेरी भी अज़मत से आला है, तेरी अज़मत से अफजल है। तो इस एतबार से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं उम्मत को कि अगर मोमिन बन जाओ और मुकम्मल तौर पर अल्लाह पर ईमान ले आओ तो इंसान की जो अज़मत है, जो इज़्ज़त है, जो वक़ार है, जो रिफ़त है, वो खाना काबा से भी अफजल है। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करती हैं, फरमाती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईसाइयों का ज़िक्र इंजील के अंदर किया है और यहूदियों का तौरात के अंदर किया है और जब भी उनको पुकारा है तो या अय्युहल मसाकीन के नाम से पुकारा है और जब उम्मत मुसलमा यानी उम्मत मुहम्मदिया को अल्लाह ताला ने पुकारा है तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू से पुकारा है और तकरीबन 88 मरतबा अल्लाह ताला ने मोमिन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और मोमिन का लफ्ज़ अपनी ज़ात के लिए भी इस्तेमाल किया है। यानी अल्लाह तबारक व तआला को ये उम्मत इतनी महबूब है, ये इज़्ज़त और वक़ार अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को बख्शा है कि अपना नाम दिया है। तो ज़ाहिर बात है नाम बंदा उसको ही देता है जो बड़ा ही महबूब होता है और जो इसका मुस्तहिक भी होता है। इसी तरह सूरह हुजरात की आयत नंबर 13 अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू। में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ लोगो हमने तुम्हें पैदा किया एक मर्द से और एक औरत से और हमने बनाए तुम्हारे शोबे और कबाइल ताकि तुम्हारी पहचान हो सके। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक अल्लाह ताला के नज़दीक वो बुलंद है, वो मर्तबे वाला है जो मुत्तकी है, परहेजगार है। तो इस एतबार से भी हमें ये नज़र आया कि अल्लाह ताला के नज़दीक
अगर कोई बुलंद मर्तबे वाला है, रिफ़त वाला है, अज़मत वाला है, वक़ार वाला है या इज़्ज़त वाला है, वो शख्स है जो मुत्तकी है, जो परहेज़गार है, जो अल्लाह से डरने वाला है। Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity, as opposed to the other way around when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else. Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are. मुल्क के दूसरे शहरों की तरह ननकाना साहब में भी जो गर्मी का ज़ोर जारी है, पारा जो है 40 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है और महकमा मौसमियात की जानब से आइंदा जो चंद रोज़ है उसमें भी गर्मी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ साथ जो हीट वेव है इसमें भी काफ़ी इजाफा हो गया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए लोग घरों से कम निकलें, अगर निकलना मजबूरी हो तो सर ढाँप कर निकलें। 12 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान बच्चे और बुजुर्ग भी घरों से कम निकलें। दूसरी जानब महकमा तलीम की जानब से 28 मई से सरकारी स्कूलों में तातीलात का ऐलान भी कर दिया गया है, जबकि रेस्क्यू 11, 22 और महकमा सेहत के अमले को भी हाई अलर्ट रहने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mixed some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans, with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs and it's cold as well.
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा के मौके पर भी इरशाद फरमाया कि या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, अला इन्ना रब्बकुम, तुम्हारा परवरदिगार वाहिदुन एक है, व इन्ना अबाकुम वाहिदुन, और तुम्हारा वालिद यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी एक ही हैं। तुम में से कोई भी शख्स अफजल नहीं है लिए अरबीन अला अजमीन, यानी कोई भी अरबी अजमी पर फोकियत नहीं रखता और कोई भी अजमी अरबी पर फोकियत नहीं रखता। ये नहीं कि कुरान अरबी में है, हदीस अरबी में है, तो इस लिहाज से उसको फोकियत हासिल होगी। अगर कोई अजमी है और कुरान और सुन्नत को समझने वाला है और पे अमल करने वाला है तो वो अरबी से अफजल है। इसी तरह फरमाया कि वला अली अहमरा अला असवदा, तो कोई भी सुर्ख रंग वाला, सफ़ेद रंग वाला वो काले रंग वाले से अफजल नहीं है, और इसी तरह काले रंग वाला वो सफ़ेद रंग वाले से अफजल नहीं है। अगर कोई काले रंग का है और वो गरीब भी है, झोंपड़ी में रहता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला पर मुकम्मल ईमान रखता है और अल्लाह के फरामीन की पाबंदी करने वाला है, अल्लाह का महबूब है, तो वो उस बंदे से अफजल बन जाता है, चाहे वो उसका जितना मर्जी बड़ा स्टेटस हो। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक बुलंद कौन है? जिसके अंदर अल्लाह का डर है और परहेजगार है। तो अल्लाह ताला के नज़दीक भी वही मुकाम वाला है, इज़्ज़त वाला है, रिफ़त वाला है और अज़मत वाला है। तो इस हदीस से और आयत से हमें यह बात वाज़े पता लगी, इज़्ज़त अगर हासिल करनी है तो परहेजगारी इख्तियार करनी पड़ेगी। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा होती हैं और आप सवालिया अंदाज से पूछते हैं, अय्युन्नासु खैर, तुम में से बेहतरीन इंसान कौन है, यानी कि इज़्ज़त वाला कौन है? सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, आप बेहतर जानते हैं। मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 खूबियाँ बताई हैं। अगर 5 खूबियों में से कोई एक खूबी है तो अल्लाह के नज़दीक वो इज़्ज़त वाला है। फरमाया कि सबसे पहले जो अच्छा तिलावत करने वाला है, किरात करने वाला है, और वो किरात अल्लाह की रज़ा के लिए करता है। नंबर 2 पर जो अल्लाह से डरने वाला है, हर मामले में अल्लाह से डरने वाला है। तीसरे नंबर पर जो नेकी का हुक्म देता है, लोगों तक नेकियां पहुंचाता है। और इसी तरह चौथे नंबर पर मेरे आका ने फरमाया कि जो लोगों को बुराई से रोकता है, किसी भी तरीके से रोकता हो। 5वें नंबर पर फरमाया कि जो लोगों के दरमियान सुलह कायम करने वाला हो, लोगों की इस्लाह करने वाला हो या सुलह करने वाला हो, तो वो अल्लाह ताला के नज़दीक बड़ा ही इज़्ज़त वाला है। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ़ फरमा हुए और आपने दावत नबुव्वत आम करना चाहिए और आपने पैगाम हुक्मरानों को पहुँचाना चाहा, तो उस वक़्त एक सहाबी रसूल जो हज़रत जसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हरकल के पास गए। हरकल ने बतौर तकरीम के एक चेयर पेश की, कुर्सी पेश की। आप उसके ऊपर बैठे, लेकिन बाद में पता लगा ये तो सोने की है। आप फ़ौरन खड़े हो गए। हरकल ने कहा कि तुम क्यों खड़े हो गए हो? तो उसने उस वक्त सहाबी ने यह कहा कि समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यनहा अन मिस्ली हाजा, कहा कि अल्लाह के प्यारे हबीब ने सोने और सोने जैसी कोई भी चीज़ है उस पर उसका इस्तेमाल हमारे ऊपर हराम करार दिया है। तो उसने कहा ये तो हम तकरीम के लिए करते हैं। उस वक़्त सहाबी रसूल ने फरमाया कि उस चीज़ में कभी भी इज़्ज़त नहीं हो सकती जिसको रसूलुल्लाह हराम करार दे, मना फरमा दे। तो इस एतबार से हर वो चीज़ जो इंसान के लिए, जो मुसलमान के लिए हराम है, जो नाजायज़ है, वो कभी भी इंसान की इज़्ज़त का सबब नहीं हो सकती। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें फरमान मिलता है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला और अबू तलहा बिन सुहेल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसकी रिवायत करते हैं, कोई शख्स ऐसा है जो किसी भी मुसलमान की तकरीम को ख़राब करता है, यानी किसी जगह पे बंदे की इज़्ज़त है, उसका लोग इज़्ज़त करते हैं, उसका मुकाम है, और वो उसकी इज़्ज़त को ख़राब करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालुहु भी उसकी इज़्ज़त को ख़राब करेगा उस जगह पे जहाँ पे उसकी इज़्ज़त है। तो इस एतबार से भी एक मोमिन को, मुसलमान भाई को एक नसीहत भी है, अगर ख़ुद इज़्ज़तदार रहना चाहता है, ख़ुद इज़्ज़त वाला बनना चाहता है, अल्लाह के नज़दीक भी इज़्ज़त वाला कहलवाना चाहता है,
तो फिर लोगों की इज्जत करना शुरू करे, लोगों की तकरीम करे, उनकी ऐब जो ही ना करे। एक हदीस हमें मिलती है कि अगर तुम्हें अपने ऐब का पता लग गया है कि ये तेरे अंदर खामी है, तो अपनी ऐब की तरफ रहे, लोगों की ऐबों को तलाश न कर, लोगों की इज्जतों को ना उछाल। और आज हमारा मामला ये रहता है, हम लोगों की ऐब को देखते हैं, लोगों के गुनाह को देखते हैं और अपनी खूबियों को देखते हैं। और याद रखिए, इज्जत हमेशा वो शख्स ही दे सकता है जिसके पास खुद इज्जत होती है। जो खुद बेइज्जत होता है वो कभी भी किसी की इज्जत नहीं कर सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि तुम जानते हो कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक इज़्ज़त वाला कौन है? तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आप बेहतर जानते हैं। मेरे आका ने फरमाया कि जो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहे। और तुम जानते हो कि अल्लाह के नज़दीक जलील कौन है? तो अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आप बेहतर जानते हैं। फरमाया कि जो दुनिया की लालच करे। शख्सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हैं, एक बादशाह था और उसके पास एक वज़ीर था। एक दफ़ा खुशी के अंदर बादशाह ने वज़ीर को कहा कि तेरे दिल में कोई तमन्ना हो, आरज़ू हो? वज़ीर ने कहा, जी बिल्कुल है, मैं चाहता हूँ कि मुझे भी कोई किसी मुल्क का मैं बादशाह होता। बादशाह ने कहा कि तुम मेरी जगह पे बादशाह बन जाओ। उसने कहा कि ये कैसे मुमकिन है? कहा मुमकिन है, अगर 3 सवालों के जवाब दे दो तो तुम इस के सल्तनत के बादशाह बन सकते हो। उसने कहा कि वो क्या? कहा कि फिर लिखारी को बुलाया, कहा कि ये 3 सवाल हैं, अगर इसका जवाब दे दो तो बादशाह बन जाओ, अगर तुमने जवाब ना दिया तो फिर सर करम है, अगर ये शर्त मानते हो तो ठीक है। उसने कहा बिल्कुल ठीक है, 3 सवाल तो मैं दे दूंगा जवाब। लिखारी को बुलाया और कहा वो 3 क्या है कि सबसे बड़ी हकीकत क्या है, दूसरा सवाल थे सबसे बड़ा धोखा क्या है, और तीसरी चीज़ क्या है कि सबसे ज़्यादा कमज़ोरी वाली चीज़ या बुरी चीज़ इंसान के लिए क्या है। उसने इसको मामूली समझा और कुछ वक़्त उसको मिला और वो लेके चला गया। अब वो सवाल को ढूंढने की बजाय वो उसके ख्वाब देखने लगा। वक़्त करीब रह गया तो उसने कहा कि चलो मैं सवालों के जवाब ढूंढता हूँ। बहुत सारे दानिशवर उसके पास आए। उसने उससे पूछा कि ऐसा जवाब चाहिए जिससे हर बंदा मुतमिन हो जाए। किसी ने भी ऐसा आंसर ना दिया, यहाँ तक कि एक शख्स मिला जो बकरियों को चरा रहा था। उसने उसको बुलाया और कहा कि तू लगता है किसी सल्तनत का वज़ीर है? कहा बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों, क्या हालत हुई है तुम्हारी? कहा कि ये मसला है, सारी बात बताई। कहा कि इसके सवालों के जवाब मुझे आते हैं। वो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा बता दीजिए। कहा बता देता हूँ। कहा कि सबसे बड़ी हकीकत क्या है? तो उस बुज़ुर्ग ने कहा कि सबसे बड़ी हकीकत है कि दुनिया से इंसान को रुखसत होना है, यानी मौत सबसे बड़ी हकीकत है। कोई भी चीज़ है, हर चीज़ को फना होना है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान। वो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कि दूसरे सवाल का जवाब क्या है? तो कहा दूसरा सवाल क्या है? कहा कि सबसे बड़ा धोखा क्या है? तो बुजुर्ग ने कहा कि सबसे बड़ा धोखा इंसान की अपनी ज़िंदगी है। वो सोचता है कि कल मैं ये करूँगा, परसों मैं ये करूँगा, मेरे साथ ये ज़िंदगी बाकी रहेगी, मैं ये कर लूँगा, यहाँ तक कि ज़िंदगी किसी वक्त भी उसको धोखा दे देती है। मेरे आका ने फरमाया, ज़िंदगी को जानते हो, ज़िंदगी और मौत के दरमियान कितना फासला है? सहाबा किराम ने अर्ज़ की कि 1 रकत की मिकदार। मेरे आका ने फरमाया नहीं, अभी नियत की है, ना जाने हाथ उठा सकूँ ना उठा सकूँ। इतनी मिकदार की भी मौत और ज़िंदगी के दरमियान फासला नहीं है, यानी कि कभी भी इंसान दुनिया से रुखसत हो सकता है, धोखा दे सकती है। तीसरी चीज़ जब उसने कहा नहीं, तीसरी चीज़ के लिए कीमत लगेगी। 2 सवाल फ्री हो गए हैं। अर्ज़ की कि तीसरी का फिर क्या कीमत क्या है? कहा कि ये जो मेरे पास कुत्ता है, जो जिस प्याले में दूध पी रहा है, इसको पी लो। तो वो उसको पीने के लिए खड़ा होता है। तो कहा कि तीसरी चीज़ का आप जवाब यही है जो तुमने किया है, यानी दुनिया की लालच, दुनिया की हिरस, वो इंसान को अंधा कर देती है। अल्लाह ताला की बारगाह में हम अर्ज़ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, oh, great idea, oh, vadya. The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a rapid charge facial and then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London Lash patch test on her. She was absolutely fine with London Lash. So I used the London Lash. इस वक्त फूलनगर शहर की सब्ज़ मंडी में खड़ा हूँ और इस वक्त गर्मी के फलों में बहुत ज़्यादा फल हैं, लेकिन तरबूज एक ऐसा फल है कि जो अपने जायके और खुशबूदार और मिठास की वजह से सबसे ज़्यादा मशहूर है। वैसे तो इस वक्त सेब, आड़ू, अमरूद, खुरमानी, लुगाट भी हैं, लेकिन वो महंगे फल हैं जो कि गरीब आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बहुत ज़्यादा हैं। गरीब आवाम उन फलों को नहीं खरीद सकी, लेकिन तरबूज एक ऐसा फल है कि जो कम कीमत में 40 रुपये किलो के हिसाब से आवाम इसे ख़रीद रहे हैं और बड़े ज़ौक़ शौक़ से इसे खाते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तरबूज फल बहुत अच्छा है, मौसम के लिहाज से जायका भी अच्छा होता है, मीठा भी अच्छा है और ये बाकी फलों की निस्बत जायके में अच्छा है और ये हमेशा जो है ना मौसम के लिहाज से इसको खाना चाहिए, बेहतरीन फल है। और हम ये गाड़ियों के हिसाब से आते हैं, हर रोज़ एक गाड़ी 2 गाड़ी सेल करते हैं जिसमें 80 मन 50 मन ऐसे वज़न होता है। तो ये तरबूज आपसे लोग शौक़ से ख़रीदते हैं? माशाल्लाह शौक़ से ख़रीदते हैं। ये देखिए आपने कि इस गर्मी के मौसम में लोग सेहत अफ़ज़ा और खुश जायका तरबूज बड़े शौक़ से ख़रीद रहे हैं और खा रहे हैं। मेरा भी आवाम को ये मशवरा है कि इस गर्मी के मौसम में सबसे सस्ता फल तरबूज है, ये इस्तेमाल करें और सेहतमंद रखें। कैमरा टीम गफ़ार अहमद के हमरा डॉक्टर लियाकत अली, साउथ एशिया ग्लोबल न्यूज़, फूलनगर। My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and go on, you come with us. She said, no, let us go, we're fighting. No.
I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that, that was no problem. I could do that blindfolded. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was. अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम से कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कादिर रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया। आप लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई इस्लामाबाद में गैर, बिजली के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, तो आप लोगों की आवाज़ सुनी नहीं गई। देखिए, जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में होश रुपा इजाफे के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की थी। 300 यूनिट तक का उन्होंने कहा था कि हम सोलर सिस्टम देंगे। हाँ जी। कराची में, सिंध में देना शुरू किया हुआ, वहाँ वो हमारी हुकूमत है, पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है। टैक्स देना हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर ताजिर की जिम्मेदारी है। ट्रस्ट है लोगों का, मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। It's me, Jia. This is my Street Vibes.
got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. मई की धूप में जब हर तरफ गर्मी का राज होता है, ऐसे में कुदरत का ये जर्द तोहफा अमलतास न सिर्फ साया फराहम करता है बल्कि माहौल में रंगों की बहार भी ले आता है। अमलतास जिसे सोने की झाड़ी भी कहा जाता है, न सिर्फ एक खूबसूरत दरख्त है बल्कि इसका तिबी इस्तेमाल भी अहमियत रखता है। इसके फल जिसे मुकामी तौर पर सना कहा जाता है, कई यूनानी नुस्खों में बतौर दवा इस्तेमाल होते हैं। शहरियों का बात करते हुए कहना था कि जर्द रंग के फूल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हम रोजाना कॉलेज जाते हैं तो इन्हें देखते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे दरख्त ज्यादा से ज्यादा लगाए। ये जर्द रंग के फूल बहुत खूबसूरत हैं और सुबह के टाइम जब हम आते हैं तो कॉलेज में बहुत खूबसूरत लगते हैं और दोपहर के टाइम भी छाँव का इंतज़ाम करते हैं हमारे लिए। और मसला ये है कि ये बहुत कम है तादाद में, हमें चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि इसको और ज़्यादा बढ़ाएं और इनकी तादाद में इजाफा करें और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे पौधे लगाएं। शहरियों का कहना है कि ये दरख्त सिर्फ जीनत नहीं बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का जरिया भी है। ये गर्दो गुबार को जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन फ्राहम करते हैं और शदीद गर्मी के मौसम में ठंडी छाँव बांटते हैं। जब सूरज तप रहा हो और हवा भी थम जाए, ऐसे में अमलतास के जर्द फूल कसूर वालों के दिलों पर ठंडक का फाहा रखते हैं। Hello, I'm Alan Curry and I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones I'm sure as well. And I don't like criminal activity. As opposed to the other way around when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else. Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are. Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life.
Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs and it's cold as well. Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a Repicharge facial then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London Lash patch test on her. She was absolutely fine with London Lash. So I used the London Lash. सूरज के बदलते हुए तेवर के साथ मुल्क भर की तरह हवेली लखा और गिरदो नवा में भी गर्मी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो गया। गर्मी की शिद्दत की वजह से शहरियों ने हवेली लखा रोड अड्डा हेड सुलेमान की, जिसे मुल्तान दिल्ली रोड भी कहा जाता है, सड़क किनारे लगे घने दरख्तों की छाँव के नीचे कैम मशरूबात पॉइंट का रुख कर लिया, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की मशरूबात के पॉइंट कैम हैं। यहाँ पर गन्ने का रस, सिकंजबी, सरदियाई, सत्तू और इमली के शरबत समेत मुतद्दद मशरूबात के ठेले लगे हुए हैं। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए यहाँ मशरूब पीने लोग जौक दर जौक आते हैं और ठंडे मशरूबात पीकर राहत महसूस करते हैं। हेड सुलेमान की इलाका की सरदियाई बहुत मशहूर है।
जिसमें बादाम, खशखाश, सौंफ, ज़ीरा, छोटी इलायची, 4 मगज़ और दीगर अशिया मिलाकर तैयार की जाती है, जो पीने वालों के लिए खुश ज़ैक़ा होने के साथ गर्मी की शिद्दत कम करके दिल को सुकून, ठंडक और राहत बख्शती है। रिपोर्ट शाद सईद वट्टू, नुमाइंदा साउथ एशिया, ग्लोबल टीवी, हैड सुलेमान की हवेली लखा। Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea. Oh, vadya." The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and go on, you come with us. She said, "No, let us go, we're fighting." No. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that, that was no problem. I could do that blindfolded. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was. अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम अज़ कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कादिर रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया। आप लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई, इस्लामाबाद में गए बिजली के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़,
तो आप लोगों की आवाज़ सुनी नहीं गई। देखिए, जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में होश रुबा इजाफे के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की थी। 300 यूनिट तक का उन्होंने कहा था कि हम सोलर सिस्टम देंगे। हाँ जी। कराची में, सिंध में देना शुरू किया हुआ, वहाँ वो हमारी हुकूमत है, पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है। टैक्स देना हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर ताजिर की जिम्मेदारी है। ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफ़ी ज़्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आगे में। हाँ, एक टाइम आया था जब काफ़ी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह ननकाना साहब में भी जो गर्मी का ज़ोर जारी है, पारा जो है 40 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है और महकमा मौसमियात की जानब से आइंदा जो चंद रोज़ है उसमें भी गर्मी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ साथ जो हीट वेव है इसमें भी काफ़ी इजाफा हो गया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए लोग घरों से कम निकलें। अगर निकलना मजबूरी हो तो सर ढाँप कर निकलें। 12 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान बच्चे और बुजुर्ग भी घरों से कम निकलें। दूसरी जानब महकमा तलीम की जानब से 28 मई से सरकारी स्कूलों में तातीलात का ऐलान भी कर दिया गया है, जबकि रेस्क्यू 11, 22 और महकमा सेहत के अमले को भी हाई अलर्ट रहने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। It's me, Jia. This is my street vibes. Hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I got cash, but I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity, as opposed to the other way around when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else.
Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are. Hello and welcome. This is Yesterday, Today and Tomorrow with Robin Ashby here on South Asia Global Television. In this programme, I'm going to talk about Christmas. Christmas is a festival in the Christian calendar, but it's celebrated by billions of people worldwide, whether they are Christians or not. It's a very odd thing, and it's become very secular. But why is it? Why do we have Christmas on the 25th of December each year? It was originally a religious festival. Most religious festivals are not on a fixed date. Ramadan, for instance, Easter, both of those big festivals to those major religions depends on the phase of the moon and is declared on an annual basis. But this festival comes out once a year on the 25th of December, which the more you think about it, the more unlikely it is for the event that it's supposedly celebrating. That event is the birth of a chap called Jesus, who many religions recognise as either a major prophet or as the Son of God. And that's a matter of faith. People have those faiths. But why the 25th of December, and what is it supposed to signify? Well, we need to look in a bit more detail about how it fixes with everything else. In the European, the British tradition, it's one of the quarter days. And these quarter days really are appropriations from what went before. There is a festival in the spring, which comes very close to the spring equinox. There's one in midsummer, which comes very close to the summer solstice. There's one in the autumn, which comes with the autumn equinox. And there is this Christmas, which is Christmas and the New Year, which is now, they're all tacked together now in modern culture, which are more or less the winter solstice. So, but why the 25th of December? Because the politicians, the Romans in particular, nearly 1700 years ago, decided that they were going to change their state religions, which were multiple gods, and they would go for one god, and the one god that they decided upon was the god of the Christians. It could easily have been a Mithras, the god of the Persians, whose life and festivals are in fact very similar to those of Christians. And indeed, many of those, in my view, were stolen by the early Christians to make them into a more acceptable religion, particularly to the Roman army, who were
big supporters of Mithras. Indeed, here in Newcastle, very close by, on Hadrian's Wall that I visited with you on other occasions, you can still find a shrine to Mithras. So, 25th of December, how does that work? Well, the story is that in a point in time, which is 0 Anno Domini, the year of our Lord in Latin, the Roman Emperor decided that all his citizens were going to be taxed. And to do that, they had to go to the place of their birth to register so they can be registered and taxed by the Roman Empire. So the story is that Jesus, who was not yet born at that point, his pregnant mother Mary, and his father, who was not his father because he was the Son of God really rather than the Son of Man, they had to go from where they lived at Nazareth, which is in Palestine, to Bethlehem. Why would they do that? Well, if you want to look back into the rabbinic traditions, the Bible, the Old Testament, the book that the three major religions all subscribe to, describes that the King of the Jews would be born in David's city, and David's city was Bethlehem. So for the story to fit that this presumed Jewish prophet, in order to become the founder of this new religion and to become and to be seen as the Son of God, had to go to the place that the Bible said that the King of the Jews, the Messiah, would be born, and that is the city of David, Bethlehem. So they had to get from Nazareth to Bethlehem, even though for the story to work, Mary, the mother of Jesus, had to be very pregnant at the time. So they set off, they travel, but the question one has to ask is, would this be in the middle of this Palestine winter, or Israel? These words are interchangeable in the story. It was 25th of December, which is the date that was used. In those times, and nowadays, the weather in that part of the world can be very bad. There can be snow on the ground and really not at all suitable for large numbers of people to be travelling. So why was it that was the date that the legend says it happened? Because in my view, it coincides with so many other festivals of rebirth, which you will find come with the winter solstice. So the couple arrive in this city of Bethlehem, and then there's a story of there no room at the inn, nowhere for them to stay, and so they have to spend the night in a stable, and then the baby is born, and the shepherds who are up in the hills looking after their sheep hear about this from an angel and come to worship this new God in his crib, which is presumably some sort of assemblage of hay rather than anything else, but being in a stable. They stay there for some time. Quite how is never actually recounted in the stories. In what the Christians call the New Testament, that's the various Bible stories. There are two different accounts in Matthew and Mark, and they don't actually tie up very well, except to accord with these ancient prophecies of what the King of the Jews would be. So he's born in a stable, and several things happen. One is that there's a star appears in the sky. What is this star? Is it a miracle? Is it a conjunction of the planets? Is it a comet? The debate rages on all of this. It could be any of those things. But wise men, magi, come from the east bearing gifts. And the gifts are gold, frankincense, and myrrh. We in the West really don't understand what frankincense and myrrh are, but once on a visit to India, I did actually manage to buy frankincense and myrrh and bring them home for my grandchildren to take to the Christmas celebrations that every school in the country has every year. So they come with the gold, frankincense and myrrh. But they think, we know this chap is going to be a
famous, he's a god or a king or whatever. So they arrive not at the stable, but they arrive at the palace of the king of the Jews at the time, a chap called Herod. And they say, we've come to worship the new king. And he said, I don't know anything about this. So they go off and they follow the star again, and they come to the stable in Bethlehem, and there is the baby in the manger, the cattle feeder that it's lying in, and they worship and they give these gifts, and then they depart and leave the story forever. In the meantime, Herod, as king, he's very jealous of the possibility that there is a new king that's been born, and he doesn't know about it, not his son, and he decides to do anything about it. And the story is that he ordered every firstborn male baby to be killed. Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity, as opposed to the other way around, when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else. Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are. सूरज के बदलते हुए तेवर के साथ मुल्क भर की तरह हवेली लखा और गिरदो नवा में भी गर्मी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो गया। गर्मी की शिद्दत की वजह से शहरियों ने हवेली लखा रोड अड्डा हेड सुलेमान की, जिसे मुल्तान दिल्ली रोड भी कहा जाता है, सड़क किनारे लगे घने दरख्तों की छाँव के नीचे कायम मशरूबात पॉइंट का रुख कर लिया, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की मशरूबात के पॉइंट कायम हैं। यहाँ पर गन्ने का रस, सिकंजबी, सरदियाई, सत्तू और इमली के शरबत समेत मुतद्दद मशरूबात के ठेले लगे हुए हैं। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए यहाँ मशरूब पीने लोग जौक दर जौक आते हैं और ठंडे मशरूबात पीकर राहत महसूस करते हैं। हेड सुलेमान की इलाका की सरदियाई बहुत मशहूर है, जिसमें बादाम, खशखाश, सौंफ, ज़ीरा, छोटी इलाची, चार मगज़ और दीगर अशिया मिलाकर तैयार की जाती है।
जो पीने वालों के लिए खुश ज़ैक़ा होने के साथ गर्मी की शिद्दत कम करके दिल को सुकून, ठंडक और राहत बख्शती है। रिपोर्ट शाद सईद वट्टू, नुमाइंदा साउथ एशिया, ग्लोबल टीवी, हैड सुलेमान की हवेली लखा। Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans, with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs and it's cold as well. So we have the baby Jesus who's been born in Bethlehem, in the city of David, and the existing king who was a client of Rome. That's the way that they operated. They had some lands that they conquered and ruled directly, and some they ruled through client kings. Judea, Israel, Palestine, that whole area was under the control of this King Herod, and he ordered that the slaughter of the firstborns, firstborn males, obviously, because they couldn't perceive the idea of having a queen, except married to a king, and so somehow the Holy Family got news of this, and they fled to Egypt and went into exile, and somehow or other, and it's not really recounted how this happened, they ended up back in Nazareth, in northern Judea, sometime later, where the baby Jesus was brought up by Joseph, his human father, who was a carpenter, and he learned to be a carpenter as well. And he went on to his mission of converting the Jews to his teachings. He, in my view, and very arguably must have been the case, he was a rabbi in the Jewish rabbinical tradition, and some time later the appropriation into the new religion of Christianity came about. So we've got our baby Jesus born, and it's been decided in about the 3rd century by the Pope, who was the Bishop of Rome, and the Emperor, that there would be, as it were, an official birthday for the baby Jesus, and that would be 25th of December. Why the 25th of December? Because we know there are so many other festivals going on there at the time of the summer solstice.
The main ones of those were the festival of Mithras, again born in humble beginnings, went on to a mission. He was the light god, and his celebrations, as I mentioned, run by the Roman army, were very similar to the sorts of things that happen at Christmas. So there are these various traditions, including there's a Persian one called Yelda. And Yelda celebration is a time when families come together for feasting, celebrations, poetry, special food made with fruit and nuts. Many of those things are now reflected in modern Christmas traditions. The poetry is reflected in Christmas carols, which are sung in churches and on television. And the fruit and nuts you see very frequently come in the Christmas cake and the Christmas pudding that are essential parts of any Christmas. But even this idea of the summer solstice, it goes back to prehistoric times. In England you can find Stonehenge, which is a massive temple, for want of a better word, with huge stones that were brought 60, 70, 80 miles by manual labour only. There was no carts, there were no trucks, or any of that sort. And these things were set up on Salisbury Plain in a big circle, and on the summer solstice, the sunlight shines down to a particular point, an altar, and so that again is coincidental with this 25th of December idea of Christmas. So these traditions that we have, however, many of them are not old traditions at all. The centrepiece of any family home at Christmas time is the Christmas tree. Now, this is much more in the Nordic tradition, where the Christmas time, the winter solstice, was known as Yule, and we still have that reflected in the Yule log. The Yule log is no longer a big log that goes onto the fire, but is a rolled up cake covered in chocolate. But we still have it, we still call it the Yule log. Many years ago I was in Scandinavia, in Sweden at this time, and there they have a Yule bock. The Yule bock is a very large reindeer who is built at Christmas time and is burnt at the New Year to welcome in the next year. And the Yule bock, the reindeer, again, that is one of the traditions of Christmas, which is how do the children get their presents? The fantasy is that they're brought by Father Christmas, who's also known as St. Nicholas in the German tradition. A man in a red coat who is on a sleigh which is towed by reindeer, and he goes all around the world in 24 hours delivering presents to every child. In the old tradition, he comes down the chimney. This fat old man comes down the chimney and leaves presents for the children. It's pretty unlikely, isn't it? But that is what small children are told, and they all believe it. This is actually aided by the United States, whose NORAD, their Northern Radar, every year puts online a tracker, so you can tell where Santa is with his sleigh, and you can see it moving around the world delivering presents from the Pacific Ocean, Australia and Japan, or across India and Pakistan, over the Middle East, and he ends up here and then goes on to America as he follows the sun around the world, delivering these billions and billions of presents. All very likely, the children lap it up and they love it until they get to the age of about 10, when they stop believing, but they still go along with the tradition because they like the idea of the presents, and they fear that if they say they don't believe in Father Christmas, then they won't get any presents. So that's when there's a Scandinavian impact on Christmas, and the Christmas tree. Interestingly, Norway sends Britain a Christmas tree every year to mark the aid that we gave to Norway during the Second World War.
And indeed, a town within Norway also sends one to Newcastle. So we can walk out from here and we can go and see our own Christmas tree in Newcastle, marking the gratitude of these people for what happened 75 years ago. On our Christmas tree, we have decorations and candles of course are a fundamental part of any kind of winter celebration of whatever your religious tradition. People have candles because it's about the coming back of the light. You're at the time of the shortest day of the year. The sun is moving on in the Northern Hemisphere and the days get longer and longer. And indeed, within a few days of this recording, there is the time of equivalence when the days and the nights in Britain are of exactly the same length. And that doesn't happen again until October. In other parts of the world, because of the aspect of the sun, that doesn't quite happen in the same way, but it happens here. We have our Christmas cards. Christmas cards, as a German idea, came over, like so many of our Christmas traditions, as a consequence of our Queen Victoria, who was the first Empress of India, by the way, marrying a German prince, Prince Albert. And he brought over a lot of ideas. Holly is another one. Holly is an evergreen, spiky plant with red berries, and which are made into wreaths, and they're used to decorate houses. He brought over a lot of ideas like that, including the Christmas card. And Christmas cards were very big for a very long time. They are now somewhat fading in less significance, partly because they're so expensive now and the cost of delivering them is so expensive, partly because of the advent of the internet, which enables people to send much more personal Christmas greetings. And many people, like me, actually write a family newsletter, which is sent out at Christmas time. So all the people that you're not going to see, the friends and the relatives that you're not going to see over Christmas, you tell them what's happened for the last year. For us older people, it's a time for competitive boasting about the achievements of our grandchildren. And I'm a sucker for that, like everybody else. Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a Repicharge facial then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London Lash patch test on her. She was absolutely fine with London Lash. So I used the London Lash.
Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, oh, great idea, oh, vadya. The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity. As opposed to the other way around, when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else. So I mentioned earlier the Christmas carol, which is derived from the Persian winter solstice celebrations, where poetry was read. And I want to read you one of the very earliest Christmas carols that goes back to the 1400s. That's 500, 600 years ago. And it's only 3 lines. It's Buvez bien toute la compagnie. That's an interesting line. It means everybody drink well. And it's in French, it's in Norman French, which of course is a throwback to the conquest of Britain by the Norman French 300 years earlier. And Norman French was still used extensively, including in this carol. Buvez bien toute la compagnie, make good cheer and be right merry, and sing with us joyfully, Noel, Noel. Now, that pretty much sums up Christmas, which is, for the adults, is a time of family getting together, remembering the past, looking forward to the future, eating well, drinking well, and in the end, quarrelling amongst yourselves and being happy that people go back to living their own lives. So we have many other Christmas carols, most of which celebrate this original Christmas story that I described. There are things like, once in royal David's city stood a lowly cattle shed, where a mother and her baby laid in a stable as their bed. So that again echoes this idea of Jesus being born in the city of David and therefore as of royal descent. There's a way in a manger that talks very much about the sleeping of the baby in a stable. Hark the herald angels sing. There's much more spiritual about that one. This is surrounded by angels, the angels of heaven. We three kings of Orient are. That's we three kings from the Orient. This is celebrating the visit of the Magi from the east, which is presumably from Persia.
And this is often subverted by younger children to "We three kings of Orient are, one in a taxi, one in a car, one on a scooter, beeping his hooter, following yonder star." And all of these are on the basis that Jesus was the Messiah prophesied in the Old Testament. They retell the story, and everybody retells them every year, the source of which is so often forgotten. As far as people of the Christian faith are concerned, this is a very serious time of year when they are celebrating this rebirth story, and it's one of the major festivals of the Christian calendar. But so many people nowadays, it's a secular time. There are significant films are shown for the first time on Christmas Day, where the television broadcasters compete to get the largest audience share. And at the same time of year, because now Christmas and the New Year are really joined together in one long festival, the football season kicks off again. Boxing Day, which is the day after Christmas Day, known because of servants used to be sent home to their parents for Christmas, for the day after Christmas Day. So they left the people in their big homes without servants for one day while I visited them. And it's Christmas. They were given Christmas boxes to take to their parents. The idea of looking after servants comes again from Mithras, where the feast there, the masters served the slaves with food, and indeed that tradition is still carried on. My father, who was an officer in the Royal Air Force, on Christmas Day he used to have to go into the barracks every Christmas Day to serve Christmas lunch to the men under his command. So that tradition even now is carried on for nearly 2,000 years. It's a time of merriment. It's a time of looking forward to the new year, to the coming back of the sun, to the coming of the spring, to the rebirth of the earth. And that tradition comes from so many different sources that nobody any longer understands the big context that almost every nation, every race has a stake in this. Even in Africa, there is a festival which is very similar to Christmas. And if we go to the Muslim traditions, the Hindu traditions, and all of those others, all of them are reflected in Christmas. And at the end of, the beginning of the Christmas season, we say to everybody, Merry Christmas and a Happy New Year. And when we come to that, I wish that to you and your family. Enjoy that season before the coming of the spring and the better weather. This has been Robin Ashby, yesterday, today and tomorrow for South Asia Global Television. Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money.
And when you go to them with an idea, they will always go, oh, great idea. Oh, vadya. The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. मुल्क के दूसरे शहरों की तरह ननकाना साहब में भी जो गर्मी का ज़ोर जारी है, पारा जो है 40 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है और महकमा मौसमियात की जानब से आइंदा जो चंद रोज़ है उसमें भी गर्मी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ साथ जो हीट वेव है इसमें भी काफ़ी इजाफा हो गया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए लोग घरों से कम निकलें, अगर निकलना मजबूरी हो तो सर ढाँप कर निकलें। 12 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान बच्चे और बुजुर्ग भी घरों से कम निकलें। दूसरी जानब महकमा तलीम की जानब से 28 मई से सरकारी स्कूलों में तातीलात का ऐलान भी कर दिया गया है, जबकि रेस्क्यू 1112 और महकमा सेहत के अमले को भी हाई अलर्ट रहने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम अज़ कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कायदे रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया। ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते।
स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। लाहौर के शाह आलम चौक में एक ऐसी मस्जिद वाक़या है जिसे एक रात में तामीर किया गया था। इस मस्जिद के इतनी कलील वक्त में तामीर की वजह और वाक़या भी इंतहाई दिलचस्प और ईमान अफरोज है। इस मस्जिद के बारे में इल्लामा इकबाल ने यह शेर मौजू किया था, मस्जिद तो बना दी शब भर में इमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। तारीख बताती है कि अंग्रेज़ों के दौर में इस मकाम से एक मुसाफिर का गुजर हुआ और उसने यहाँ नमाज अदा की, जबकि ये इलाका इस वक्त हिंदुओं की अक्सरियत का हामिल था। हिंदुओं को ये बर्दाश्त न हुआ और उन्होंने हंगामा राई शुरू कर दी। मामला जब अदालत तक जा पहुंचा और वहां हिंदुओं का मौक़िफ़ था कि इस जगह पर मंदिर तामीर होगा, जबकि मुसलमान यहाँ मस्जिद तामीर करना चाहते थे। इस मौका पर मुसलमानों के वकील ने इन्हें तजवीज़ दी कि अगर वो यहाँ सुबह फजर से पहले मस्जिद तामीर कर लेते हैं तो केस का फैसला इनके हक में हो जाएगा। ये सुनना था कि मुसलमानों ने गामा पहलवान की क़यादत में रातों रात मस्जिद तामीर करने का फैसला किया और जिस मुसलमान के पास जो सामान था इसने वो मस्जिद की तामीर के लिए वक्फ कर दिया। यहाँ तक कि ख़वातीन रात भर अपने सरों पर पानी रख कर लाती रहीं ताकि मस्जिद की तामीर मुमकिन हो सके। दूसरी जानिब मस्जिद की तामीर मुकम्मल होने के बाद अदालत ने भी मुसलमानों के हक में फैसला सुना दिया। ये मस्जिद 1917 में तामीर की गई और इसका नाम मस्जिद शब्बर रखा गया। ये मस्जिद 3 मरला के रकबा पर तामीर है। दर्ज वाला कथा तो इस रवायत पर मबनी है जो सीना बसीना चलती आ रही है और ज़बान ज़दे आम है, यानी हर एक ने ज़ेब दास्तान के लिए हस्बे ज़रूरत इसमें इजाफा किया। असल मामला थोड़ा मुख्तलिफ है। नकूश लाहौर नंबर में इस मस्जिद की तामीर का मामला कुछ इस तरह दर्ज है। दा में यहाँ पर एक कच्चा सा चबूतरा था जिस पर लोग नमाज पढ़ा करते थे। इसके करीब ही हिंदुओं का एक मंदिर तामीर हुआ। मुसलमानों को मस्जिद पुख्ता करने का ख्याल आया तो हुकूमत ने हिंदू मुस्लिम फसाद के पेश नज़र इसकी इजाज़त न दी। मई 1922 में एक रोज पुरजोश नौजवानों ने आपस में मशवरा करके रात रात में यहाँ मस्जिद खड़ी कर दी। वो इशा की नमाज के बाद काम पर लगे और फजर की नमाज के बाद फारिग हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1917 की बात है कि यहाँ से एक मुसलमान का गुज़र हुआ। उसने यहाँ पे नमाज अदा कर दी कि जो सारा इलाका था हिंदुओं की अक्सरियत का हामिल था। तो हिंदुओं ने ये कहना शुरू कर दिया कि मुसलमान ने हमारे इलाके में आके नमाज क्यों अदा की है, और वो इसमें यानी मुसलमान का नमाज़ पढ़ना बर्दाश्त हुआ। हिंदू ये कहने लगे हम यहाँ पे मंदिर बनाएंगे। और जब मुसलमानों को पता चला कि हिंदुओं का सिर्फ एक मुसलमान का नमाज़ पढ़ना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा और सिर्फ इस बात के ऊपर वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे मंदिर बनाएंगे, तो मुसलमानों ने भी कहना शुरू कर दिया कि हम यहाँ पे मस्जिद बनाएंगे। मुसलमानों और हिंदुओं का आपस में जो है ना तनाज़ा शुरू हो गया। लड़ाई होते होते बात उस वक्त की अदालत तक चली गई। तो उस वक्त की अदालत के जो जज साहब हैं उनने कहा कि मैं सुबह जगह का मुआयना करके फिर उसके बाद इसके हक़ में फ़ैसला दूँगा। तो जब सुबह जज ने मुआयने के लिए आना था तो मुसलमानों के जो वकील थे उन्होंने मुसलमानों को मशवरा दिया कि अगर आप रातों रात इस मस्जिद को तामीर कर दें तो हो सकता है ये फ़ैसला आपके हक़ में हो जाए। तो मुसलमानों ने जो आपस में मशावरत की और मशावरत करने के बाद जो है ना फिर उनने ये तय किया कि हम गामा पहलवान से दरख्वास्त करते हैं कि वो आएँ और अगर वो हमारी सरपरस्ती करें तो हम एक रात में मस्जिद बना सकते हैं। तो हिंदुओं की चूँकि यहाँ पे अक्सरियत थी, उनका जो है ना लड़ाई झगड़े का भी खौफ था, ख़दशा था कि लड़ाई झगड़ा ना हो जाए।
तो फिर जब गामा पलवान के पास मुसलमानों के जो है ना एक वफ़द गया और उन्होंने जाके उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर आप हमारी सरपरस्ती करें, हमारी निगरानी करें, तो हम जो है ना यहाँ पे एक मस्जिद बनाना चाहते हैं और सुबह इस तरह जज ने आना है और फ़ैसला होना है इसके हक़ में। तो उस गामा पलवान ने ये कहा कि जो है ना उन्हें जो है ना हामी भर ली और जो है ना वो तशरीफ़ ले आए और वो शालमी चौक में आके वो बैठे और जो है ना बहुत सारे मुसलमान फिर इकट्ठे हुए तो उन्होंने मस्जिद को तामीर करना शुरू कर दिया। और जब सुबह फजर की नमाज अज़ान का टाइम था तो उस वक़्त तक जो है ना मस्जिद को मुकम्मल तामीर कर लिया गया था। तो फिर जब नमाज हो रही थी तो उस वक्त जो है ना हिंदू आए तो हिंदुओं ने देखा कि ये तो पहले से तामीर शुदा इमारत मौजूद है और मुसलमान तो यहाँ पे नमाज अदा कर रहे हैं। तो इस तरह हिंदुओं ने एक दूसरे को इकट्ठा करके बुलाया हुआ था। कुछ हिंदू तो ये देख के ही वापस चले गए कि भाई ये तो पहले से तामीर शुदा इमारत मौजूद है, मुसलमान नमाज भी अदा कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने दूसरे हिंदुओं से जो लोग थे उनसे कहा कि भाई आपने हमें इतनी दूर से क्यों बुलाया। तो वो आपस में यानी उनको ये कहकर वापस चले गए। और फिर थोड़ी देर के बाद जज आया तो जज ने भी आके क्या देखा कि ये इमारत पहले से तामीर शुदा है, तो जज ने मुसलमानों के हक़ में फ़ैसला दे दिया। उस वक्त ये कानून होता था कि कोई भी मज़हबी इबादतगाह अगर पहले से तामीर शुदा है तो उसको गिराया नहीं जा सकता था। तो फिर जब अल्लामा इकबाल को पता चला कि मुसलमानों ने एक रात में मस्जिद तामीर कर दी है, तो फिर अल्लामा इकबाल ने ये शेर कहा था कि मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी है कि बरसों में नमाजी बन ना सका। और इस मस्जिद को जो है ना 1917 में बनी, फिर इसी तरह मुख्तलिफ़ औक़ात में इसको रिपेयर किया जाता रहता है। 1354 हिजरी में इसको दोबारा रिपेयर किया गया। फिर तीसरी बार 2007 में इसके जो लेंटर थे वो पोसीदा हो गए थे और इसको जो है ना फिर 2007 में मेरे सामने जो है ना इसको फिर दोबारा रिपेयर तीसरी बार रिपेयर किया गया। इसी तरह जो वक्तन मस्जिद का जो काम निकलता रहता है तो वो काम होता रहता है। और इस मस्जिद को आज भी जो है ना लोग जो है ना दूर दूर से देखने के लिए आते हैं और यहाँ पे नमाज़ पढ़ना एक सादत समझते हैं। और अक्सर लोग तो ये भी कहते हैं कि एक रात में मुसलमानों ने कैसी मस्जिद को तामीर किया। तो कई लोग तो ये कहते हैं कि जिन्नात ने शायद तामीर की हो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगरचे अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो तो ये तो बहुत छोटी सी इमारत थी। बहुत बड़ी बड़ी और बुलंद इमारतें भी अल्लाह ताला की मदद से बनाई जा सकती हैं। साढ़े बड़े दसते ने हिंदुस्तान जो पाकिस्तान बनया सी ना तो उस तो पहले तो मस्जिद तैयार हुई है तो एक रात च तैयार हुई सी। जी ना मस्जिद ना तैयार होंदी तो इत्थे मंदिर तैयार होना सी। समझ लो मुसलमानों का जज्बा सी, औरतों का बंदियां का जज्बे के नाल तो एक रात तैयार हुई है। सुबह फजर की नमाज हुई इत्थे तो हाली तक उस तरह ही कायम हो चलती आ रही है। तो इत्थे बहुत दुनिया आती है जी मस्जिद के बारे पुछते हैं तो फोटोआं लाते हैं, हर हिस्ट्री पुछते हैं पिछली। पहले मिट्टी की तैयार हुई सी, उस बाद फिर पत्थर लगा। मेरा नाम फराज नकवी है। मैं यहाँ पे ऑफिस के काम आया था तो साथ ही मिज़ान बैंक है तो ये मस्जिद थी। मैं बड़ा सुना था इनके बारे कि मस्जिद मतलब एक रात में बनी है, तो बड़ी क़ीदत थी मुझे कि मैं यहाँ नमाज़ पढ़ूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़र्स्ट टाइम ये नमाज़ पढ़ी है इस मस्जिद में। हम पहले ना जज्बा कुछ और होता था, पहले मुसलमान थे वो उनका जज्बा और था, आज भी वैसा ही आ रहा है। माशाल्लाह अच्छी मस्जिद है। मेरी एक ख्वाहिश पूरी हो गई कि मैं इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ी है। सर मेरा नाम समीउल्लाह है, मैं बाजोड़ की रिहायशी हूँ। तकरीबन 2010-11 से मैं यहाँ पे काम करता हूँ। तो इस नमाज में माशाल्लाह नमाज़ पढ़ने आता हूँ। कारी साहब जानते हैं हमें, तो हमें बहुत सुकून महसूस होती है जब यहाँ पे हम नमाज़ पढ़ने आते हैं। जो मुसलमानों का उस टाइम का जज्बा है और आज का जज्बा है तो अंदाजे मुताबिक मुझे लगता है कि आज भी ज़िंदा है वो वाला। ये एक रात का मस्जिद है तो उस टाइम तो हम थे नहीं, लेकिन सुना है कि यार एक रात में बना हुआ है मस्जिद। तो हमें बहुत खुशी महसूस होती है जब यहाँ पे हम नमाज़ पढ़ने आते हैं तो बहुत सुकून महसूस होता है। अक्सर मैं काम करता हूँ बार होता तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इस मस्जिद में पहुँचूँ, यहाँ पे नमाज़ पढ़ लूँ, तो बहुत खुशी महसूस होती है सर, बहुत सुकून महसूस होता है। मेरा नाम एजाज़ अहमद है जी। मैं यहाँ पे तकरीबन 1970 से दुकान कर रहा हूँ और ये शब भर की मस्जिद जो है ये पाकिस्तान बनने से पहले की बनी हुई है।
और इल्लामा इकबाल ने कहा था, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पापी पुराना था बरसों नवाजी बन ना सका। बहरहाल ये मस्जिद बहुत पुरानी है और उसका सामने ये जहाँ पे मैं बैठ खड़ा हूँ इस वक्त ये मोती मंदिर है, इंदिरा गांधी के दादा का नेहरू का मंदिर था। और मस्जिद जो थी वो इसके मुकाबले में बनी थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे मस्जिद नहीं है, तो रातों रात ही तकरीबन 24 घंटों में ये मस्जिद तैयार हो गई थी। पाकिस्तान बनने से पहले की मस्जिद है ये। और अब आज आपने भी देख लिया है और मस्जिद उसी हालत में जैसे पुरानी पहले थी वैसी की वैसी मस्जिद आज भी वैसी की वैसी ही है। यहाँ पे उस वक़्त मुसलमानों को हुकूमत नहीं थी, हिंदुओं की हुकूमत थी। यहाँ पे ये जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पे मंदिर था और मंदिर के सामने जो है ना जगह थी एक, वहाँ पे अपना गामा पहलवान था। और यहाँ से कहते थे कि मस्जिद जब बनाई गई है ना रात को शुरू की है 4 बजे इशा के बाद शुरू हुई है और सुबह अज़ानों के फजर की नमाज जब हुई है ना तो मस्जिद तैयार हो गई थी। लोहारी यहाँ से लेके ना तो अपना दिल्ली दरवाजा तक ईंटों की लाइन लगी हुई थी लोगों की। उन्होंने पत्थर ला के एकदम मतलब रातों रात मस्जिद बनाई थी ये। और एक रात में ये मस्जिद सुबह उन्होंने मुआयना करना था, अंग्रेज़ ने आकर मुआयना करना था, डाला ने आकर मुआयना करना था कि ये मस्जिद यहाँ पे जगह है कि नहीं। सुबह आई तो देखा तो हाँ मस्जिद की जगह मौजूद थी, मस्जिद बनी हुई थी उस वक्त। उसने फिर डिक्लेयर किया था कि हाँ मस्जिद ठीक है, मस्जिद की जगह ठीक है। मेरा नाम जी शहजाद अब्दुल हमीद है जी और मैं अंदरून लाहौर का रहने वाला हूँ, रैशी हूँ। जद्दी पुश्ती लोग हैं, हम इधर के रहने वाले। तो ये जो मस्जिद है आप इसके बारे में मैं जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे बाप दादा ने जो बताया, ये एक तारीख़ी मस्जिद है, बहुत ज़्यादा तारीख़ी मस्जिद है। असल में ये जब इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे थे, सारे लोग ये इकट्ठे थे, तो उस वक्त ये मुसलमानों ने कहा कि ये मस्जिद है, हिंदू कहते थे ये मंदिर है। तो उस वक्त की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इल्लामा इकबाल साहब थे, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे, वो वकील थे। तो उन लोगों की मुशावरत से और लोगों की मुशावरत की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि ये सुबह आकर देखेंगे ये क्या है, मंदिर है, मस्जिद है, क्या सिलसिला है। तो मुसलमानों में आपको पता ही है क्या जज्बा होता है। ये आपने जब इस्लाम की बात पे आता है तो वो अल्लाह के हुक्म से फिर और बन जाता है मसला। तो फिर लोगों ने यकदम अल्लाह की मदद से एक रात में खड़ी हो गई थी। ये तारीख़ी बात है, ये भी ये मस्जिद शब पर एक रात वाली मशहूर है पूरी वर्ल्ड में। इधर से बड़े बड़े सयाह आए हैं, बड़े बड़े लोग आए हैं। मेरा काम है ये कबाड़ वगैरह का, तो मुझे 25 साल से ऊपर हो गए शौक में, 25 साल से ऊपर मुझे हो गया। तो बाप दादा ने बताया, तारीख ने बताया, ये एक तारीख़ी मस्जिद है, अल्लाह पाक की दी हुई एक नेमत है। तो खुदा की मदद से उस वक़्त के लोगों ने ईमान था, जज्बा था, उस वजह से ये एक रात में तमीर हो गई है। इस वजह से इसको एक मस्जिद शब पर अल मशहूर एक रात वाली मस्जिद शालमी चौक कहते हैं। मट्टी और गारे का दौर था, वो मट्टी और गारे के ज़रिए उन्होंने ये इसको तमीर कर दिया अल्लाह पाक की रहमत से, नबी पाक के सदक़े। तो ये ना मतलब कि खड़ी हो गई। सुबह आके देखा जब गवर्नमेंट ने तो ये मस्जिद थी, फजर के अज़ान इन्होंने दे दी मुसलमानों ने। तो जैसे हिंदू पहले सोए रहे थे उस वक्त भी अल्लाह के हुक्म से वे सोए हुए थे। My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and come on, you come with us. She said, not let us go, we're fighting. No. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that, that was no problem. I could do that blindfolded. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was.
Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, oh, great idea, oh, vadya. The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. Hello, my name's Alan Curry and I'm standing here now under the title of Badge of Honour. Now, how did that happen? Well, I met a few people who had conversations relevant to today's society and maybe some of the concerns we might have about some of the youth and some of the individuals they may meet, some of the people who might be their heroes, some of the people who might be hero worshipped, if that makes sense, and maybe some of my background or some of my experiences others may listen to and wonder whether I could lead a type of life like that. Now, that's not to say I've had a perfect life, but I've done a number of things over the years that I'm probably very proud of. But I have to really start at the beginning where, it's an easy one, wasn't it? I was born at an early age. But I always interested now when I listen to politicians in particular, and they always seem to have to say they came from a working class background or their dad worked in a factory to sort of prove the meritocracy of what they're getting involved in. My father was a joiner, my mother worked in a shoe shop, and we lived in a 2-bedroom flat. And I don't think we were poor, but if we were poor, I obviously didn't know at such an early age. But they were role models for myself. Again, I wonder today when we discuss things, whether or not we have as many role models within the family as opposed to when we did in days gone by. I say days gone by because obviously I'm, a little older than some people. But my upbringing was very easy in the sense that I was looked after, I was well fed, I was nourished, but I was also a little bit of, how can I say, a little bit off the wall in some of the things I used to get up to. I remember my mum telling me that she was in bed and knocked on the door in the flat with a neighbour saying, "Do you know where Alan is?" Well, my nana, who was a good church-going lady, lived around the corner from us. It would appear that at 3 years of age, I climbed out the window at 10 o'clock at night and walked around with my nana's. We were the only flat in the location that had locks on the outside of the window to keep me in. Now, whether that was a good start for how I was going to make progress in my career or other things, it did appear that I had the element of thinking outside the box, even at 3 or 4 of those type of things. We have another situation. I have a sister who's 18 months younger than me, and then my father and my mother used to make elderberry wine, which was alcoholic. Well, apparently I took her on the drink when I was 3 years of age and she was 18 months old, and the two of us were drunk at that time. But it was part of growing up. You learnt by your mistakes. You know, this a little thing, but
there was one or two things I may not have got things right, and my mum would say, wait till your father got home. And he would never really chastise me, but it was the threat of the father. And when it comes to things like being at school, you know, my mum used to put me out at 5, 6 years of age, and I'd walk to the local school. You don't see any of that now. I don't think any children know how to get to school other than buy a car. But on that same token, when I'm doing that type of thing, my father never ever really said good things about me. But that wasn't to say he wasn't proud of me, and we can go into later on about aspects of it. But when he was, he always told my mum, particularly when I played in football teams and things like that, he followed me, he took me everywhere. He would always tell me when I had a bad game, and then I'd speak to my mum later on, and she would say, your dad said you had a good game today. And just that sort of kindness, respect, and actually looking always for, not thanks, but just the fact he thought well of me. He also told me when I did things wrong. And if I was sick at school, and I've always had a good sickness record as an adult, but if I was sick at school, my father wouldn't allow me to stay off. But if I had to be off, my mum, you know what mums and dads are like, mum will say you shouldn't go to school. I had to stay in bed all day. There was no lying around watching television or anything like that. So there was no point of being ill because you never got a day off. And all those sort of things that we talk about now, parental responsibility, hopefully that's spun off into some of my life in relation to the way I brought my children up, and had some influence on my grandchildren. But it starts with the family. And I think if we go back to some of the things we're talking about, and maybe we'll progress as I talk about other things I've done in my career, I think the family, the cohesion within the family, I'd love to see it come back. And maybe our heroes, or people who we respect, are not necessarily people who've made a lot of money or who actually drive fast cars, as opposed to people who may have a story to tell and can manage and work on the respect and responsibility from an upbringing, and some of the responsibilities that adults have. Sadly, I do see certain aspects around the streets. I mean, I like to drink like everybody else now in this sort of world, and how many times now we go to a public house and the mother's there with the child and the child's running around the pub and without any respect for others. So all those little things from my background, bringing myself up to talk about these different things and how it helped me progress into the role I moved on to, my career, and even after a full career, we're maybe going to be talking about some of those things. And if anybody listens and thinks it's worthwhile, and I always used to say, if I'm talking to people and you like what I say and you think that's possibly for me, I could follow that, well, so be it. But if you say, well, it's not for me, well, once again, I haven't got the monopoly on wisdom. I have a lot of experience now, and sadly, you only get experience by making mistakes. But I would go back to the family upbringing as being a core part of my role, understanding, and how I progressed. Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a Repicharge facial then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London Lash patch test on her. She was absolutely fine with London Lash. So I used the London Lash. अगर
अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम से कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कायदे रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया। इस वक्त फूलनगर शहर की सब्ज़ मंडी में खड़ा हूँ और इस वक्त गर्मी के फलों में बहुत ज़्यादा फल हैं, लेकिन तरबूज एक ऐसा फल है कि जो अपने जायके और खुशबूदार और मिठास की वजह से सबसे ज़्यादा मशहूर है। वैसे तो इस वक्त सेब, आड़ू, अमरूद, खुरमानी, लुगाट भी हैं, लेकिन वो महंगे फल हैं जो कि गरीब आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बहुत ज़्यादा हैं। गरीब आवाम उन फलों को नहीं ख़रीद सकी, लेकिन तरबूज एक ऐसा फल है कि जो कम कीमत में 40 रुपये किलो के हिसाब से आवाम इसे ख़रीद रहे हैं और बड़े ज़ौक़ व शौक़ से इसे खाते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तरबूज फल बहुत अच्छा है, मौसम के लिहाज से जायका भी अच्छा होता है, मीठा भी अच्छा है और ये बाकी फलों की निस्बत जायके में अच्छा है और ये हमेशा जो है ना मौसम के लिहाज से इसको खाना चाहिए, बेहतरीन फल है। और हम ये गाड़ियों के हिसाब से आते हैं, हर रोज़ 1 गाड़ी 2 गाड़ी सेल करते हैं, जिसमें 80 मन 50 मन ऐसे वज़न होता है। तो ये तरबूज आपसे लोग शौक़ से ख़रीदते हैं? माशाल्लाह शौक़ से ख़रीदते हैं। ये देखिए आपने कि इस गर्मी के मौसम में लोग सेहत अफ़ज़ा और खुश जायका तरबूज बड़े शौक़ से ख़रीद रहे हैं और खा रहे हैं। मेरा भी आवाम को ये मशवरा है कि इस गर्मी के मौसम में सबसे सस्ता फल तरबूज है, ये इस्तेमाल करें और सेहतमंद रखें। कैमरा टीम गफ़ार अहमद के हमरा डॉक्टर लियाकत अली, साउथ एशिया ग्लोबल न्यूज़, फूलनगर। आप लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई, इस्लामाबाद में गए बिजली के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, तो आप लोगों की आवाज़ सुनी नहीं गई। देखिए जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में होश रुपा इजाफे के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की थी। 300 यूनिट तक का उन्होंने कहा था कि हम सोलर सिस्टम देंगे। हाँ जी। कराची में, सिंध में देना शुरू किया, वहाँ वो हमारी हुकूमत है, पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है। टैक्स देना हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर ताजिर की जिम्मेदारी है। ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं।
So, I mentioned about my father, my parents, their influence. I went to, obviously, a junior school, and at those days, I keep saying those days, don't I? The 11 plus was the exam which separated people, pretty comprehensive what we do now. So at 11 plus, they separated in theory between the intelligent kids and maybe not so intelligent kids. So I sat 11 plus and didn't pass. So I went to what was then known as a secondary modern school. And I always remember in my junior school days, you used to get your school reports. And they used to say, and the one my mum always refers to is, Alan is quite happy with what he does. So I was quite happy playing football, I was quite happy doing what boys should do at school, and maybe studying wasn't my forte, but I didn't think I was thick, or if I was, I didn't know I was. But on the same token, I failed my 11 plus, because you say fail now, or fail there, now you'd say you weren't successful. But I moved to what was then a secondary modern school, and the classes were graded A, B, C. I was in the A class. I've now put in amongst 100 children, shall we say, in the 11 years older. And my birthday is the 27th of August. So I was always the youngest in the class, with the way the classes were set out. And I went through the first year and I was the top student out of those 100. So I'm a failure at one school and I'm the most successful student at 11 years of age. How? I don't know. Probably Alan just woke up a little bit instead of actually being happy with what he does. And at those days, again, you could then sit what they call the 13 plus. And if you passed that, you moved to a grammar school because you were showing a bit of potential. Well, I still like to play football. I enjoyed what I was doing. I was with my mates. So the next year I wasn't the top student. Now that might just be laziness. It might just be the fact I might have been a little bit more cuter the way I wanted to operate, but I enjoyed where I was. And on reflection, it was a good decision of mine, even at 12 years of age, because the rest put me in store to how I progressed through. So I then ended up, and one of the best things that happened to me, I think, was having the ability to play for the local football team, the school team, because when you play with teams and you're bonding with individuals, there's two parts happening to it. You get a bit of status within your peers because of the fact you're a member of the team. And we were quite successful, and you travelled with your friends and you did whatever. So around those sort of times, you would be getting more kudos than maybe you would if you were just a member of the gang. So I was, I've got to go back, as I'm going to talk about things, and I bring my parental responsibility in. Little sayings my dad always said. And so when you hear me talk about things I've done, he always used to say, self-praise is no recommendation. So when I'm talking like this, and I'm talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself, there's a couple of bad ones I'm sure as well, but on the same token, just remember, self-praise is no recommendation. It's for you, the viewer, to make your mind up whether what I say has some merit, it's interesting, if it can be, and how you view it yourself. So I'm in the football team. Living in the northeast, the key leaving at school at 15, which you could, I actually stopped on the following year till I was 16. But most people, I left school in 1972. I know as you look at me here, that seems a long way away with such a young looking face, but we'll carry on about that at a later date. But on the same token, in 1972, most people left school and went into an apprenticeship or they worked at the ministry. And I didn't think that was for me. I didn't like the idea of sitting behind a desk. I wanted to be active, and I wasn't sure about an apprenticeship either. So there was a thing called the police cadets. Now, the police cadets, police officers in the mid-70s were not well paid. Most people went into apprenticeships, and once they'd done an apprenticeship, they didn't leave the different trades to join the police. So they had a thing called police cadets for young people between 16 and 19, where they would keep them in the building, keep them on ice, if that makes sense, teach them good habits, but it wasn't the easiest thing to get into. So I applied, and my career development officer at the time said, look, don't bother, you're not going to get in. But I did apply, and I went to what was Morpeth at the time, if you know the area here, and went for my very first interview at 15 years of age. Never done anything like that before. Sat in front of 3 adult police officers and asked questions and did things. And some of the things I also did for my self-fulfillment was, I had 2 paper rounds, I played in a football team, I used to go out once a week to collect charity pool money to get little bits of extra pocket money,
to help myself for the youth club and all the rest of it. So when I'm doing this interview, I'm able to tell people what I'm doing, which is, I suspect at the time, was out of the ordinary, as I was trying to develop and create and be a better person for myself. And I know now, because I've seen the actual application form, and they viewed me, and they've always put at the bottom the comment, and it said, It's me, Jia. This is my street vibes. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are.
So I sat in front of two senior police officers, mature, obviously looking at only 15 years of age. They asked me questions. I hopefully answered them in an assertive but not cocky way. They must have seen something in me, but I've actually seen the application form. And it's not like today's recruitment, and it's got on the bottom of the form, will always give him his best. He's young enough, will never top the bill, worth a try. Now, can you imagine that sort of introduction to a role, which actually wasn't the greatest sort of compliment, but I put it in perspective. I was one of 316 people who applied for 16 jobs, and I got one of them. So as a consequence, I'm now being accepted to be a police cadet. I'm just before my 16th birthday, and I go to a location known as Akeley Heads, where there's 120 cadets, male and female, in what really was a little bit of a boys' army situation. I was taught good habits. I was actually taught how to look after myself. I was taught how to keep fit. I was take care of myself, but also respect people, to understand discipline. The lights went out at 11 o'clock, curfew every night. And I suppose part I've maybe missed is here, what was my early influences to join the police? Well, if you're going to look back, and sadly on YouTube or whatever, if you follow that, you'll see some clips of two police shows at the time. One was Z-Cars and one was Dixon a Dog Green. And if you ever look at those in black and white, I actually thought that looks as if it's interesting. And on the same token, it looked as if I wouldn't be sitting behind a desk. Notwithstanding, we can talk about paperwork and things like that at a later date. And the other side, which was even then in me, people joined the police to be a help and source of respect and assistance to the community. So you actually did want to help people, and I'm sure we'll get in the opportunity where a number of times I've helped people, a number of times I may not have been thanked for it, but that didn't put you off doing it. So when I'm now at Akeley Heads, I spent 2 years there, and I was the youngest on the school again. I'm the youngest wherever I've gone. I'm probably still one of the youngest that's going to be on one of these films. We can talk about that again later on, but on the same token. So I'm now amongst bigger boys and girls, 18, 18 and a half. In fairness, there was an element of, how can I put it, physical activity that was sometimes a little bit rough and coarse, but it didn't do any harm. I actually broke my leg when I was there playing football, and I was on crutches for 14 weeks. We had a PTI at the time who was, we loved him to death. But I went in to say, I'm sorry, Mr. Wardle, that's what they called him, I've broke my leg. He made me sit in the corner and do sit-ups for an hour. I wasn't allowed anything off. So, I've talked about my dad wouldn't let us be off. And now even in the world I'm now frequenting, the discipline was there. Just because you've got a broken leg doesn't mean to say you can't participate. And it was real character building. You took everything on the chin, you sort of learned, and then of course, you learned how to deal with adversity and the consequence of adversity. And from being a police cadet for 2 years, I didn't learn about the law, I just learned how to look after myself, discipline, how to maybe, as I said, deal with adversity. Not everything was right. Sometimes I hated it. I definitely hated the first year being away from home, but I wasn't going to give in. And I just thought, this is not going to beat me. And that turned me moving forward. So that takes me up to 18 and a half, 19 years of age. I've now joined the police. Hopefully what you've listened to on this episode takes you to that stage. The next episode will take us into the beginning of 32 years career in the police service of Northumbria.
I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a Repicharge facial and then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London Lash patch test on her. She was absolutely fine with London Lash. So I used the London Lash. मई की धूप में जब हर तरफ गर्मी का राज होता है, ऐसे में कुदरत का ये जर्द तोहफा अमलतास न सिर्फ साया फराहम करता है बल्कि माहौल में रंगों की बहार भी ले आता है। अमलतास जिसे सोने की झाड़ी भी कहा जाता है, न सिर्फ एक खूबसूरत दरख्त है बल्कि इसका तिबी इस्तेमाल भी अहमियत रखता है। इसके फल जिसे मुकामी तौर पर सना कहा जाता है, कई यूनानी नुस्खों में बतौर दवा इस्तेमाल होते हैं। शहरियों का बात करते हुए कहना था कि जर्द रंग के फूल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हम रोजाना कॉलेज जाते हैं तो इन्हें देखते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे दरख्त ज्यादा से ज्यादा लगाए। ये जर्द रंग के फूल बहुत खूबसूरत हैं और सुबह के टाइम जब हम आते हैं तो कॉलेज में बहुत खूबसूरत लगते हैं और दोपहर के टाइम भी छाँव का इंतज़ाम करते हैं हमारे लिए। और मसला ये है कि बहुत कम है तादाद में, हमें चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि इसको और ज़्यादा बढ़ाएं और इनकी तादाद में इजाफा करें और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे पौधे लगाएं। शहरियों का कहना है कि ये दरख्त सिर्फ जीनत नहीं बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का जरिया भी है। ये गर्दो गुबार को जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन फ्राहम करते हैं और शदीद गर्मी के मौसम में ठंडी छाँव बांटते हैं। जब सूरज तप रहा हो और हवा भी थम जाए, ऐसे में अमलतास के जर्द फूल कसूर वालों के दिलों पर ठंडक का फाहा रखते हैं। Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea. Oh, vadya." The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal and where it's contract, take your time. My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and go on, you come with us. She said, "No, let us go, we're fighting." No. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that, that was no problem. I could do that blindfold. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was.
आप लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई इस्लामाबाद में गैर, बिजली के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, तो आप लोगों की आवाज़ सुनी नहीं गई। देखिए, जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफे के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की थी। 300 यूनिट तक का उन्होंने कहा था कि हम सोलर सिस्टम देंगे। हाँ जी। कराची में, सिंध में देना शुरू किया हुआ, वहाँ वो हमारी हुकूमत है। पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है। टैक्स देना हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर ताजिर की जिम्मेदारी है। अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम से कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कादिर रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया। ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफ़ी ज़्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफ़ी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। It's me, Jia. This is my Street Vibes. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. सूरज के बदलते हुए तेवर के साथ मुल्क भर की तरह हवेली, लखा और गिरदो नवा में भी गर्मी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो गया।
गर्मी की शिद्दत की वजह से शहरियों ने हवेली लखा रोड, अड्डा हेड सुलेमान की, जिसे मुल्तान दिल्ली रोड भी कहा जाता है, सड़क किनारे लगे घने दरख्तों की छाँव के नीचे कायम मशरूबात पॉइंट का रुख कर लिया, जहां पर मुख्तलिफ़ किस्म की मशरूबात के पॉइंट कायम हैं। यहां पर गन्ने का रस, सिकंजबी, सरदियाई, सत्तू और इमली के शरबत समेत मुतद्दद मशरूबात के ठेले लगे हुए हैं। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए यहां मशरूब पीने लोग जौक दर जौक आते हैं और ठंडे मशरूबात पीकर राहत महसूस करते हैं। हैड सुलेमान की इलाका की सरदियाई बहुत मशहूर है, जिसमें बादाम, खशखाश, सौंफ, ज़ीरा, छोटी इलायची, चार मगज़ और दीगर अशिया मिलाकर तैयार की जाती है, जो पीने वालों के लिए खुश ज़ैक़ा होने के साथ गर्मी की शिद्दत कम करके दिल को सुकून, ठंडक और राहत बख्शती है। रिपोर्ट शाद सईद वट्टू, नुमाइंदा साउथ एशिया, ग्लोबल टीवी, हैड सुलेमान की हवेली लखा। Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are. Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs and it's cold as well.
I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a rapid charge facial and then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London lash patch test on her. She was absolutely fine with London lash. So I used the London lash. Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea. Oh, bahut vadiya." The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. मुल्क के दूसरे शहरों की तरह ननकाना साहब में भी जो गर्मी का ज़ोर जारी है, पारा जो है 40 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है और महकमा मौसमियात की जानब से आइंदा जो चंद रोज़ है उसमें भी गर्मी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ साथ जो हीट वेव है इसमें भी काफ़ी इजाफा हो गया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए लोग घरों से कम निकलें, अगर निकलना मजबूरी हो तो सर ढाँप कर निकलें। 12 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान बच्चे और बुजुर्ग भी घरों से कम निकलें। दूसरी जानब महकमा तलीम की जानब से 28 मई से सरकारी स्कूलों में तातीलात का ऐलान भी कर दिया गया है, जबकि रेस्क्यू 11, 22 और महकमा सेहत के अमले को भी हाई अलर्ट रहने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and go on, you come with us. She said, "No, let us go, we're fighting." No. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that, that was no problem. I could do that blindfolded. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was. अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगज़ीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम से कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कादिर रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया।
आप लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई, इस्लामाबाद में गैर, बिजली के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, तो आप लोगों की आवाज़ सुनी नहीं गई। देखिए, जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में होश रुपा इजाफे के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की थी। 300 यूनिट तक का उन्होंने कहा था कि हम सोलर सिस्टम देंगे। हाँ जी। कराची में, सिंध में देना शुरू किया हुआ, वहाँ वो हमारी हुकूमत है, पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है। टैक्स देना हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर ताजिर की जिम्मेदारी है। Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans, with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs and it's cold as well. इस वक्त फूलनगर शहर की सब्ज़ मंडी में खड़ा हूँ और इस वक्त गर्मी के फलों में बहुत ज़्यादा फल हैं, लेकिन तरबूज एक ऐसा फल है कि जो अपने जायके और खुशबूदार और मिठास की वजह से सबसे ज़्यादा मशहूर है। वैसे तो इस वक्त सेब, आड़ू, अमरूद, खुरमानी, लुगाट भी हैं, लेकिन वो महंगे फल हैं जो कि गरीब आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बहुत ज़्यादा हैं। गरीब आवाम उन फलों को नहीं खरीद सकी, लेकिन तरबूज एक ऐसा फल है कि जो कम कीमत में 40 रुपये किलो के हिसाब से आवाम इसे ख़रीद रहे हैं और बड़े ज़ौक़ शौक़ से इसे खाते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तरबूज फल बहुत अच्छा है, मौसम के लिहाज से जायका भी अच्छा होता है, मीठा भी अच्छा है और ये बाकी फलों की निस्बत जायके में अच्छा है और ये हमेशा जो है ना मौसम के लिहाज से इसको खाना चाहिए, बेहतरीन फल है। और हम ये गाड़ियों के हिसाब से आते हैं, हर रोज़ 1 गाड़ी 2 गाड़ी सेल करते हैं जिसमें 80 मन 50 मन ऐसे वज़न होता है। तो ये तरबूज आपसे लोग शौक़ से ख़रीदते हैं? माशाल्लाह शौक़ से ख़रीदते हैं। ये देखिए आपने कि इस गर्मी के मौसम में लोग सेहत अफ़ज़ा और खुश जायका तरबूज बड़े शौक़ से ख़रीद रहे हैं और खा रहे हैं। मेरा भी आवाम को ये मशवरा है कि इस गर्मी के मौसम में सबसे सस्ता फल तरबूज है, ये इस्तेमाल करें और सेहतमंद रखें। कैमरा टीम गफ़ार अहमद के हमरा डॉक्टर लियाकत अली, साउथ एशिया ग्लोबल न्यूज़, फूलनगर। It's me, Jia. This is my street vibes. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight.
Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are. Hello everyone, my name is Terence South. I formerly served in the British Army, and here today I'm going to talk to you about In the Line of Duty series. The thing about the line of duty, where does it come from? What makes you want to do it? And so for me it goes back to my childhood. I was always fit, always physically doing things. I was always a footballer. I was always a rugby player. I did what everybody else did, fitted in nicely. But one thing I did do was I was always part of a team. And that's one thing I hadn't realised. I enjoyed being a team member. And one thing about being team members in your youth, you should really respect that it takes everybody in the team to do the job. Whether in a football team, rugby team, swimming team, everybody's got to win. Everybody's got to do the best. It's a bit like, it's not like today where you've got people on the internet and they haven't really achieved much to get where they are. All they've been good is technically savvy and preying on people who are sort of weaker than them. If you go back 50 years, you get people who have actually constructed life and done things and enjoyed things without money. And a lot of things orientate around money. And in later life, I spent 23 years living in China. And I seen China go from a poor country to a rich country. And in that time, the only thing that changed people was money. And it becomes greed, it becomes an obsession. But going back to my youth and going back to the line of duty, I was always a team member, always played my part. Didn't necessarily always win, but when you didn't win, you learned more than when you did win. If you did win, sometimes you didn't know why you won. Were you good that day, or were they just bad? Were they missing someone? So that was the thing. So when I was little, sort of junior school, I had a milk round. I used to get up every morning, 4 o'clock, go do a milk round, and then go to school. So instead of buying milk at the supermarket, I would go to a dairy, would go out on a truck, and we would deliver hundreds of houses their milk. So when they opened the door in the morning, bottle of milk, that was it. And that was the first time I really understood people letting you down. Because when the weather was bad, it was snowing and it was throwing it down, it would be a case of, open the curtains, I've got to go to work. But you're only 15, you're only 14.
Well, at the end of the week, you've got the money. You get up, you go out, you get wet. But you did that. Sometimes you're working with lads who like, oh, I slept in, I couldn't get up, my mum wouldn't let us go, my dad wouldn't let us go. And so you ended up doing their work and everybody worked harder. And so therefore, very on in life, you found you've got to find people the same as you who pull their weight and be part of your team. So I moved on through there and being educated at the same time. But moving on into secondary school, I didn't know what I wanted to do. I didn't have a clue. Probably because the education was so rich. It was geography, history, science, languages. I could do them all and I enjoyed them all. So I wasn't focused on anything in particular. So for me, at 16 years of age, after taking 11 CSEs and doing quite well at it, it was like, well, what are you going to do? I don't know. I haven't found that something yet. And I never found that something until I was 21 years of age, what I wanted to do. So then, family pressures, what are you going to do? You can't just go and get a job. And I was then pretty much forced back into staying at school. So I stayed at school and I did what the family wanted. They wanted me to get educated. Once I was educated, I made O-levels. That was it. Then it was university or do something else. So that was me. Right up until taking my O-levels, getting to 17 years of age, I didn't have a clue what I wanted to do. Nobody really steered me into, this is what you should do, that's what you should do, because it's make your own mind up, because this is going to be you for the rest of your life. But one thing that I did see was, I saw people going away, joining the army, coming back, taller, slimmer, broader, fit, being to all these places, and it was, China's over there, Russia's over there, he's being there, that, the world's getting smaller. And so, in the late 60s, early 70s, I was saying to myself, the world's a small place. I love this geography business. I want to be out there. I want to be traveling. And so I looked for a job that travelled. And so I broke it to my parents. I want to join the army.
So there we are. I broke the news. They don't like it. Their youngest son is going to join the army. Well, I was as educated as I was going to be without going to university, and off to the military I went. Left home, did some exams, went to London, passed my exams, well done you, and I ended up in the Royal Engineers. And well did I enjoy it. I could run. I'd done my milk round. I was used to getting up early. I suited military life, bang, from day one. I was a guy who got up early and was physical. I lived on a farm. Why not? Out there you went, doing the job. Great. Soldiering, living in rough conditions, getting wet. I'd done that as a milk lad. Other guys who'd come from the city didn't do that. Guys who'd had the city of London hadn't experienced where I had, getting up early in the morning. They'd always just played football around the park. I'd played in the open air and on fields. So anyway, in the military, it was a case of I did very well. I passed out best student in my intake, and that was like, what are you going to do? Right, what are you going to do, South? Well, I like this parachute business. What? That will ruin your career. And then I did what was best, what I thought for me, not for the army. What was best for me? What was going to get it out of my skin was, I'm going to join the Up Paras. Wow. So I left one basic training as a Royal Engineers, done very well, and I went directly across into another set of training establishments and learned how to become a paratrooper. And that was very different. That was get in there, get in the ring, fighting, punching, working all hours. That was infantry. That was hard, it was aggressive, it was grueling. But the teams were tight. Everybody at the end of that training could trust the guy next to him. It was a bond. It was an airborne brotherhood. It was unbelievable how close people were, how much they knew about each other. Very different to the Royal Engineers, which is sometimes very academic. So I was there, and I went to my squadron, doing really well. We went to the Gambia, we went to West Africa. I worked there for months. Came home, I'd now been with the Paras a year and a half. It was great, loved it. And then I came back to the UK and I was in a car crash. I was paralysed. I was lying in the local hospital here for 3 weeks, didn't move. And then it's, what are you going to do? I'm going to get up and go again. What? Do you realise what your condition is? You've got a depressed skull, you've got no feeling down one side. Yeah, I know, I'll be up and at 'em. The mental attitude and the strength I'd been able to get from doing this military training and absorbing this discipline was like, I'm going to get up and go again. And within 3 to 4 weeks, I was back on my feet, walking, I'd balanced, done. And I went back to being a paratrooper, and it was like, what are you doing here? We can't use you. Well, what do you want to do with me? And as time went on and my skull flexed out, I got everything back, I got my feelings back, I was back to being me, I had the buzz. But I couldn't parachute. I was a penguin, I had wings on my arm, but I couldn't fly, I couldn't jump out of an airplane. I was useless to them. When one of the Sergeant Major turned and says, look, you're a good guy, we're not going to waste you, we're going to invest in you. And that was good. The Army, after what I'd done, it's seeing what I put in and we're going to give back. He says, we're going to send you to college for a year. So the Army then sent me to college for a year and I finished my apprenticeship. Done. Finishing my apprenticeship was a case of, right, I'm walking, talking, doing things, everything's back to normal. What am I going to do? And I had this thing where I want to prove it to myself I can still do it. And that was nagging in the back of my mind. And there's me, my red beret on, I'm really proud of it, proud as hell. And I say to these guys, and I'd getting to know them, and they were commandos. And I thought, yeah, we'll give that a go. So leaving college, it was like, where do you want to go? Go anywhere. I'll go to the Royal Marines. Yeah? What do you want to go there for? Well, I'll just go. So I left college and I was seconded to the Royal Marines. Off I went to the Royal Marines, turned up with the red beret on. It was, because they don't get on, and I loved it.
A lot of people got an easy ride around me because I had a red beret on. But at the end of the day, I passed the commando course. I did really well. And unbeknown to me, now the man next to me was my up-and-coming commanding officer. So I made this relationship with my up-and-coming commanding officer, and that then took me into the next stage of my career, unbeknown to me, simply by the performance I'd given under the conditions. Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea, बहुत बढ़िया." The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. मई की धूप में जब हर तरफ गर्मी का राज होता है, ऐसे में कुदरत का ये जर्द तोहफा अमलतास न सिर्फ साया फराहम करता है बल्कि माहौल में रंगों की बहार भी ले आता है। अमलतास, जिसे सोने की झाड़ी भी कहा जाता है, न सिर्फ एक खूबसूरत दरख्त है बल्कि इसका तिबी इस्तेमाल भी अहमियत रखता है। इसके फल, जिसे मुकामी तौर पर सना कहा जाता है, कई यूनानी नुस्खों में बतौर दवा इस्तेमाल होते हैं। शहरियों का बात करते हुए कहना था कि जर्द रंग के फूल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हम रोजाना कॉलेज जाते हैं तो इन्हें देखते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे दरख्त ज्यादा से ज्यादा लगाए। ये जर्द रंग के फूल बहुत खूबसूरत हैं और सुबह के टाइम जब हम आते हैं तो कॉलेज में बहुत खूबसूरत लगते हैं और दोपहर के टाइम भी छाँव का इंतज़ाम करते हैं हमारे लिए। और मसला ये है कि बहुत कम है तादाद में, हमें चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि इसको और ज़्यादा बढ़ाएं और इनकी तादाद में इजाफा करें और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे पौधे लगाएं। शहरियों का कहना है कि ये दरख्त सिर्फ जीनत नहीं बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का जरिया भी है। ये गर्दो गुबार को जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन फ्राहम करते हैं और शदीद गर्मी के मौसम में ठंडी छाँव बांटते हैं। जब सूरज तप रहा हो और हवा भी थम जाए, ऐसे में अमलतास के जर्द फूल कसूर वालों के दिलों पर ठंडक का फाहा रखते हैं। Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a replicharge facial, then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London lash patch test on her. She was absolutely fine with London lash. So I used the London lash.
So if we go back and look at it, it's a case of how do you achieve success? You're getting through the Royal Engineers, you're getting top recruit, you're getting through the Parachute Regiment, you're getting Pass Plus, you've joined the Royal Marines and you've done really, really well. And then you're being noticed and people are looking at you and you don't even know about it. And the answer is, you prepare. Proper planning and preparation prevent poor performance. And that's what you've got to do. It's not a case of going on the internet, you've got to experience things. You've got to get out and do it. So, before I actually joined the army, when I was still at school, I went to the cadets. Because what did the army suit me? I went and had a look. I had a peek in the window. Is this for me or not? And I prepared myself for it. So that when I joined, it wasn't such a big thing. So it's like, we done that, we got that far, we got into the army, and then to go to the Parachute Regiment, I was fit. So before I joined the Parachute Regiment, I was there, I was learning how to box in the gym, I was running, stamina was up, and I transferred one to the other. And those things that I'd picked up extra actually helped me on, because if you were physically fit, mentally, you weren't stressed. So because you kept your body fit and you could react, shrug things off, whether it be an injury or a knock, you were much better off. So being fit and keeping yourself alert in that manner means that mentally you don't crack. Because when you've got a rucksack on your back and somebody says the end is here and it's 45 miles away or 63 kilometers away, the first thing a lot of people do is mentally go down. But if you're physically strong and you've prepared for it, break it up into stages. First 10 miles, second 10 miles, third 10 miles. I've done 3/4, you're mentally on the up, I'm nearly finished. So it's mentally preparing yourself for something is a huge part of actually getting across the hurdle in life, you know, and don't worry about it. Don't ever go to bed and worry about anything, because that achieves nothing. Nobody pays you for worrying. What you've got to do is just educate yourself to move on, not sit and worry about it. That's a waste of time. Educate yourself, go on. And education at the end of the day is the thing to do. But you've got to move your education and technology and global circumstances, I find, together. And that's what actually helped me in life, having a very open view on where you are and what you're doing, and allowing yourself that freedom to change direction. I mean, I didn't want to go back to the Paras after really working hard to get in. I went somewhere else. Mentally, I wanted to prove it to me. I went and did it. And then ticked that off. I'm as fit as I've ever been. And there was not carrying any baggage, no mental scars there. I can still do it. So for every move I've actually made, there was a reason. It was substantiated why I went from A to B. And that's really what you've got to be able to do when you make things change in your life. So this is me signing off for this week. Terence South, ex-Special Forces engineer, and I would like to thank South Asia TV. Thank you.
My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and go on, you come with us. She said, "No, let us go, we're fighting." Oh. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that, that was no problem. I could do that blindfold. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was. Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a rapid charge facial and then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London lash patch test on her. She was absolutely fine with London lash. So I used the London lash. Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea. Oh, vadya." The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. When I saw my father treating patients and the satisfaction that he used to get in treating patients who were disabled and suddenly making them walk, that gave me an inspiration as well. And that's where my mindset right from childhood was that I want to help people, I want to do something for the country. And that's where I became a doctor and then became an orthopedics and a trauma surgeon. And then
wanted to learn more and see what the best things were happening in different centers in the world. So that's where I went out to do my AO fellowship from Canada and then fellowship in knee surgery from the United States of America, and where I got an opportunity to work with the guru of knee surgery in the world. And that was something, a patient, when somebody would come in and basically who could barely walk, making them walk again. A trauma patient coming in who was disabled and making them walk again was a great satisfaction. When I saw these patients lying on the road, and 95% chances were that nobody's going to help them. So that was the inspiration that I got from the med school when I was there, and we had done the first study that in case of an emergency, there were 95% chances you'd not get an ambulance. We kept working as a social work to do something about it. And we went and tried to revamp the existing organizations, revitalize them. But then when it all didn't work out, so it came to a stage where they said, either you do something about it, which meant that I had to leave my career, a good practice, my own family hospital, and which was actually a very, very difficult decision. My family thought I was crazy, I was mad, that I was thinking of leaving my practice. Where am I going to earn from? The biggest challenge that we faced when we were making rescue was changing minds. The mindset was, it just can't be done in Pakistan, a developing country, a rescue service, and one number and people will immediately get help. So it was like as if I was talking some very strange words, and this was impossible in a developing country. The biggest challenge was we didn't have trained human resource. For the first time, we started the training of emergency medical technicians. Then the ambulances. If we imported them, we couldn't maintain them, the repair and maintenance would have been necessary. So we had to start the fabrication of ambulances within Pakistan so that it was easy for repair and maintenance. Then we started it in October, so 2004. And everybody was, it will not work out. We started with only 14 ambulances in the city of Lahore. A change of government is always a challenge. Whatever initiatives have been taken by the previous government, the new government looks at it from an apprehension and they want to start their own project. Initially, we did face a lot of resistance, and obviously we had to clarify all of those things. So the challenge and rescue go together. And when these people, even from the new government who went there and said, my mother has been saved because of this, you can stop everything else done by the previous government, but not this service. So I think that became our biggest help, and our performance spoke for itself. Starting from the city of Lahore in 2004, and today, after 16 years, when I see what we've been able to achieve, even it's difficult for me to believe that. Where we started from 14 ambulances and then expanded to all the 36 districts of Punjab province with 110 million population, our fleet went up to 350 ambulances. And we kept it very cost effective, developing a response time based model rather than a population based model. So with minimal resources, we were able to extensively cover the area. When we saw the challenge of the increasing traffic, the congested areas, the walled city or the old city areas where it was very difficult for the ambulance to respond, we went into a motorbike ambulance service. And today, the motorbike ambulance service has transformed everything, and we've been able to respond to over 600,000 calls up till now with an average response time 4 minutes, which I think is comparable even internationally. And everybody, even when we were starting the motorbike ambulance service, was a lot of apprehension. This will not be successful, this is going to be a waste, and nobody could really believe that they could do it. And today, they are able to reach the most difficult areas, the most difficult, narrow streets, even in traffic congestion, they're able to respond to emergencies. They immediately go, they're all trained staff. In 2005, we had an earthquake in Pakistan, and we saw the helplessness of the people. And immediately, 1 year after that, we established our own disaster emergency response team. And then the team, we started building our teams and the capacity of that team. And we finally applied for UN certification in 2015 after we had met the basic requirements. And today, we are the first team, the search and rescue team, which got the UN certification from INSARAG in South Asia. Then we established a model fire service, a modern fire service from Lahore in 2007, and then this service has gradually expanded to all districts of Punjab. And today this fire service has responded to over 151,000
fire incidents and saved losses worth over 450 billion rupees. So I think that's just by improving the response and professional firefighting. Then came the floods 2010, which was a major event. And so it's like, so that was, we saw the helplessness over there. So we collected all the boards available with different organizations, so organized the service. And today we manage all the floods in the city, every year which come in the province. And today we've rescued over 200,000 victims, from different flood-prone areas or inundated areas. So this was a big change. After the successful launch of an emergency rescue service in Pakistan, I still always wanted to go back and help the people of this country. So my old patients and everybody else motivated me that I needed to give more time to this clinical practice. So I had to sacrifice my evenings for this. So I had to sacrifice my private life, and I dedicate 3 evenings at least in a week to come and help these poor and needy patients. Clinical practice is very important. It keeps you humane, because once you're involved in the entire day in the administrative affairs, managing such a large service, then coming and helping people in need is a lot of satisfaction. And I think if I can provide them with those services, I think that's the biggest satisfaction that I get, which no money can bring. Today I'm very pleased that a mission impossible of saving lives has been accomplished, and millions of people have been rescued without discrimination. But I hope that we can establish safer communities to live, work and travel in Pakistan. That's our vision for the next 10 years. My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and go on, you come with us. She not let us go, we're fighting. Oh. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that was no problem. I could do that blindfold. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was. अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम से कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कायदे रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया।
Turn your radio on, it's Friday night, and I won't be It's me, Jia. Put my makeup This is my Street Vibes. till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, but I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans, with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs and it's cold as well. ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity. As opposed to the other way around, when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else.
सूरज के बदलते हुए तेवर के साथ मुल्क भर की तरह हवेली लखा और गिरदो नवा में भी गर्मी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो गया। गर्मी की शिद्दत की वजह से शहरियों ने हवेली लखा रोड, अड्डा हेड सुलेमान की, जिसे मुल्तान दिल्ली रोड भी कहा जाता है, सड़क किनारे लगे घने दरख्तों की छाँव के नीचे कैम मशरूबात पॉइंट का रुख कर लिया, जहां पर मुख्तलिफ़ किस्म की मशरूबात के पॉइंट कैम हैं। यहां पर गन्ने का रस, सिकंजबी, सरदियाई, सत्तू और इमली के शरबत समेत मुतद्दद मशरूबात के ठेले लगे हुए हैं। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए यहां मशरूब पीने लोग जौक दर जौक आते हैं और ठंडे मशरूबात पीकर राहत महसूस करते हैं। हैड सुलेमान की इलाका की सरदियाई बहुत मशहूर है, जिसमें बादाम, खशखाश, सौंफ, ज़ीरा, छोटी इलाची, चार मगज़ और दीगर अशिया मिलाकर तैयार की जाती है, जो पीने वालों के लिए खुश ज़ैक़ा होने के साथ गर्मी की शिद्दत कम करके दिल को सुकून, ठंडक और राहत बख्शती है। रिपोर्ट शाद सईद वट्टू, नुमाइंदा साउथ एशिया, ग्लोबल टीवी, हैड सुलेमान की हवेली लखा। Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a Repicharge facial then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London lash patch test on her. She was absolutely fine with London lash. So I used the London lash. Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea. Oh, vadya." The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and go on, you come with us. She said, "No, let us go, we're fighting." No. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios.
I could do that. That was no problem. I could do that blindfolded. Second World War understood where you were and what you were doing, where your head was. अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम से कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कायदे रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया। आप लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई इस्लामाबाद में गैर, बिजली के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, तो आप लोगों की आवाज़ सुनी नहीं गई। देखिए, जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में होश रुपा इजाफे के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की थी। 300 यूनिट तक का उन्होंने कहा था कि हम सोलर सिस्टम देंगे। हाँ जी। कराची में, सिंध में देना शुरू किया हुआ, वहाँ वो हमारी हुकूमत है। पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है। टैक्स देना हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर ताजिर की जिम्मेदारी है। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह ननकाना साहब में भी जो गर्मी का ज़ोर जारी है, पारा जो है 40 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है और महकमा मौसमियात की जानब से आइंदा जो चंद रोज़ है उसमें भी गर्मी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ साथ जो हीट वेव है इसमें भी काफ़ी इजाफा हो गया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक
इस गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए लोग घरों से कम निकलें। अगर निकलना मजबूरी हो तो सर ढांप कर निकलें। 12 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान बच्चे और बुजुर्ग भी घरों से कम निकलें। दूसरी जानब महकमा तालीम की जानब से 28 मई से सरकारी स्कूलों में तातीलात का ऐलान भी कर दिया गया है, जबकि रेस्क्यू 11, 22 और महकमा सेहत के अमले को भी हाई अलर्ट रहने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। ट्रस्ट है लोगों का, मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफ़ी ज़्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफ़ी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। It's me, Jia. This is my street vibes. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी करंट अफेयर्स। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो लोग मुल्क से बाहर जाते हैं नौकरी करने के लिए, कमाने के लिए, कुछ फैमिली के लिए, उनके हवाले से बात करते हैं आज। सऊदीया और अमेरिका समेत कई ममालिक से 200 से ज़ायद पाकिस्तानी बेदखल हो चुके हैं और पाकिस्तानी को निकाल दिया गया है, वो जॉब से फारिग हो चुके हैं। दूसरी जानिब यूरोप जाना नौजवानों की अक्सरियत का ख्वाब बन चुका है। अब इन्हें ख्वाबों को पूरा करने के लिए पाकिस्तानियों समेत मुख्तलिफ ममालिक के नौजवान गैर कानूनी तरीके से सफ़र करने से भी गुरेज नहीं करते, अपनी जान भी दे देते हैं डंकी के ज़रिए और सफ़र भी करते हैं, समुद्री सफ़र भी करते हैं, पैदल का सफ़र भी करते हैं, जान की परवाह नहीं करते। ख्वाब यही होता है कि यूरोप पहुँच जाएँ और अच्छा कमाएँ, अच्छा पहने और फैमिली के लिए कुछ कर सकें और पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें। ख्वाब बड़े बड़े होते हैं मगर अधूरे रह जाते हैं। आए रोज़ समुंदर में कश्ती डूब जाती है और लोग मर जाते हैं और उसमें काफ़ी लोगों की तादाद होती है। एक कश्ती में 200-200, 300-300, 400-400, 500-500 लोग होते हैं वहाँ पे और मुख्तलिफ ममालिक के लोग होते हैं। उसमें पाकिस्तान के भी लोग होते हैं, इंडिया के भी लोग होते हैं, काफ़ी लोग होते हैं, मगर जान की परवाह अपनी नहीं करते। मसला क्या है कि पाकिस्तान में गुर्बत है, यहाँ पे नौकरियाँ नहीं हैं। लोग फिर रुख करते हैं बाहर जाने का और जब बाहर जाने का रुख करते हैं तो जेब में पैसे नहीं होते, डंकी के ज़रिए फिर जाते हैं और अपनी जान भी दे देते हैं। आज इसके ऊपर बात करेंगे। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं आज निवाज मिन्हाज साहब, इनसे बात करेंगे। ये भी लोगों को बाहर भेजते हैं, वीज़ा लगवाते हैं, ओरिजिनल तरीके के साथ भेजते हैं। जो लोग 2 नंबरी के साथ लोगों को भेजते हैं
उनकी जानें भी ले लेते हैं, पैसे भी ले जाते हैं, सारा कुछ ले जाते हैं, उनके हवाले से क्या कहते हैं? मिनाज साहब क्या कहेंगे? ये जो आए रोज़ हादसात हो रहे हैं और समुद्र में कश्ती भी चली जाती है और जो लोग उसमें सवार होते हैं वो भी चले जाते हैं, क्या ये जानबूझ के किया जाता है या फिर कोई इसका नया कोई तरीकाकार अब आ चुका है? पहले भी एक हादसा हुआ, काफ़ी लोगों की शहादतें हुई, अब दोबारा एक हादसा हुआ है। आपको पता ही है यूरोप जा रही थी कश्ती तो समुद्र में डूब चुकी है वो भी, तो काफ़ी लोगों की डेथ हुई है वहाँ पे और काफ़ी लोग तो थे पाकिस्तानी भी थे और गैर मुल्की भी थे। इसके बारे से क्या कहेंगे आज? जी एहसन शहजाद भाई, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। साउथ एशिया चैनल का बहुत मैं मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे तीसरी बार बुलाया यहाँ पे। पहले भी इसी जब पहले कश्ती उल्टी थी तो मैं आया था प्रोग्राम करने के लिए, तो फिर मैंने यहाँ पे आके सारे वो हमने डिटेल के साथ बात की थी। हाँ, मैंने स्टेटमेंट दी थी सारी डिटेल में, सारी मैंने बातें की, बताया सब कुछ। अब भी देखें हम दूसरी कश्ती उल्ट गई, ठीक है ना, एक यूनान में उल्टी कश्ती, एक मुल्तानिया से जाके कश्ती उलट गई। अब बात यह है कि मैंने पहले भी ये कहा था कि ये काम इस तरह नहीं रुकेगा जब तक इसकी स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगी इमिग्रेशन हमारी, इसको अमली जामे में नहीं पहनाएंगे, इसको डिजाइन नहीं करेंगे, तब तक ये काम कंट्रोल नहीं हो सकता। अब ये अमली जामा कैसे पहनाया जा सकता है? अमली जामा इस तरह पहनाया जा सकता है कि सेनेगल, मोरितानिया, मराकश, लीबिया और ये इसके साथ जितनी भी ये लगते हैं लिंक जो लगते हैं, ठीक है ना, इनके ऊपर हमारी इमिग्रेशन जाके अपने ऑफिसर को अपने एक सेल बनाए वहां पे, जिस तरह इन्होंने इस्तांबुल में बनाया। इस्तांबुल में इन्होंने एजेंटों को पकड़ा, एजेंटों को ब्लैकलिस्ट किया, वहां से डिपोर्ट किया, एजेंट पाकिस्तान आए कंट्रोल करने के लिए। वो भी अगर एजेंटों को पकड़ते हैं तो एजेंट पैसे देते हैं, फिर वो बाहर आ जाते हैं, फिर वो काम शुरू कर देते हैं। सर मैं वही बात करने लगा ना, जब तक वहां पे ये खुद नहीं बैठेगा, इनका डिपार्टमेंट वहां पे नहीं खोलेंगे, पाकिस्तान एम्बेसीज जहां पे हैं उन एम्बेसीज के में ये FIA के जो हमारे सीनियर अफसरान हैं इनको वहां पे ट्रांसफर किया जाए और वहां पे जाके ये सारी सर्चिंग की जाए कि ना ये टूरिस्ट कंट्री है, ना ये बिजनेस प्लेस हैं। तो यहाँ पे लेने लोग क्यों आते हैं, क्या आते हैं? सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि इन्होंने डंकी लगानी होती है, इनका कोई और पर्पज नहीं होता। अब इस डंकी की वजह से ये जो कश्ती दोबारा उल्टी है, इस वजह से सर जी आपको अंदाजा नहीं है, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। ट्रेवल एजेंट जो है वो करोड़ों का नुकसान करके बैठे हैं। मेरे वीजे निकले हुए, स्टडी वीजे निकले हैं, अजरबैजान के बंदों को नहीं जाने दे रहे, बंदों को ऑफलोड करके उनकी टिकटें दाया, मेरी को 25 लाख की मेरी जाती टिकटें दाया हुई हैं। अब मुझे ये बताएं कि हमने जिनकी वहां पे एम्बेसी में फीसें भेजी हुई हैं, उनके वीजे निकलवाए हुए हैं, स्टडी वीजा, यूनिवर्सिटी बुला रही है, उसकी ईमेल है, सब कुछ है इनके पास। आपकी बात ठीक है, एक केस ये मेरे पास भी आया है, तो वो मुझे कह रहे थे कि ये यूनिवर्सिटी से सारी चीजें ओके हैं और मैंने अप्लाई किया और उनके बाद ईमेल होती है बाकू की, वो भी ईमेल भी आई, सारा कुछ साथ लगाया उन्होंने, ठीक है। FIA वाले कहते हैं जी पैसे दें आप चले जाएं बाहर, ये भी तो पैसे लेते हैं ना। फिर पैसों का इशू जो है ना, पैसों का इशू तो बहुत दूर रह गया ना। ये लो प्रोफाइल पे बंदे को रोक देते हैं, ये कहते हैं जी इंस्ट्रक्शन है हमने नहीं जाने देना। इसको कोई इस तरीके से डिजाइन करें, ये हमारी कंट्री जो बिल्कुल तबाह हो जाएगी। अवाम सरापा एहतजाज बनी हुई है, गुजरांवाला में, गुजरात में, सियालकोट में ट्रेवल एजेंटों के हालात जाके देखें, उन्होंने दफ्तर तोड़ दिए। जो उम्रा करने वाले लोग हैं, उम्रा करने वाली फैमिलीज को नहीं जाने दे रहे। जो वजह क्या है, क्यों नहीं जाने दिया कि जी आपने आगे से आगे निकलना है, फिर हमारी इंक्वायरी होगी तो हम अपनी नौकरियों को दाव पे नहीं लगा सकते। अब बात यह है कि वो तो बेचारे उम्रा करने जा रहे हैं यार, उम्रा करने में आपकी नौकरी क्यों दाव पे लग रही है? नहीं देखें ना, एक वीजा लग चुका है, सारा कुछ लग चुका है, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हैं, आप जाएंगे वहां नहीं जाएंगे, वो तो उनकी हुकूमत को चाहिए ना। जब आपका टाइम जो पूरा हो गया है उसको वापस भेजा जाए। फिर सर जी वो उनकी हुकूमत क्या करे? ये पाकिस्तानी वहां पे जाके जो आगे निकलने की कोशिश करते हैं ना, वो बदनामी का बायस बनते हैं। प्रॉब्लम असल ये नहीं है, प्रॉब्लम इनके लिए ना भेजने की वजह यह है कि तुमने आगे से जाके उम्र कम करना है और तुमने आगे स्किप करना है जाके, और वो हमें उसका अदाला हमें भुगतना पड़ेगा। ये लोग किसी जगह राइट पे हैं, इमिग्रेशन जो हमारा डिपार्टमेंट है वो किसी जगह राइट पे है। जो अब वो नए SOP बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, नए शेड्यूल बना रहे हैं कि इनके ऊपर जो इंस्पेक्शन टीम्स एयरपोर्ट के ऊपर हमने रखनी है, वो इंस्पेक्शन टीमें हो कि कौन सा बंदा एजेंटी के थ्रू जा रहा है, किसको उसकी इंटरव्यू इमिग्रेशन के लिए की उसने, आगे जाके लॉन्च में जाकर उसका इंटरव्यू करेंगे, वो पूछेंगे भी तू क्या लेने जा रहा, कहाँ जा रहा, उसके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, उसको फिर आगे जाने देंगे। ठीक है, अगर ये इस तरह नहीं करते, ये इस तरह नहीं रोकते, तो सर ये पूरा पाकिस्तान इस वक्त तबाही के कटहरे पे खड़ा हुआ है। आपको अंदाजा नहीं है कि कितने लोग परेशान बैठे हैं। मैं बता रहा हूँ, मेरा 2-2.5 करोड़ की फीसें गई हुई हैं, मेरी 30-40 लाख की टिकटें आई हुई हैं, मजीद मैंने टिकटें करवानी, मैं नहीं करवा रहा। देखिए आपका तो ओरिजिनल काम है, आपका ऑफिस है, सारा कुछ है। ये जो उम्रा कराते हैं लोग, उम्रा भी तो ओरिजिनल है ना, उम्रे का वीजा ओरिजिनल है, उम्रे का पैकेज ओरिजिनल है, ये वो सारे का सारा उनका बर्बाद हो गया। नॉन रिफंडेबल टिकटें होती हैं, नॉन चेंजेबल, नॉन रिफंडेबल,
तो इसका जिम्मेदार कौन होगा इतना नुकसान और हुआ है? वो डालते हैं सारा हमारे ऊपर, ट्रैवल एजेंट के ऊपर, ठीक है, या वीजा एजेंट के ऊपर, ये सारा हमने जवाब देना है। अब उनको हम क्लाइंट को कैसे मुतमिन करें कि बचाना क्या हमने 30,000 50,000 रुपया, और हमारा जो लॉस होता है वो 3-3 साढ़े 3 लाख का एक पैसेंजर के पीछे नुकसान हो गया, टिकटें ज़ाया हो गई। अब हम उनको कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे उनको भेजेंगे? ये इतना बड़ा ब्लंडर होगा। अब ये FIA को इतनी एप्लीकेशनें जाएंगी कि ये हमारे साथ फ्रॉड कर लिया, ये कर लिया, वो जब सिनेरियो निकलेगा तो वही निकलेगा, किश्ती वहां डूबी है, तबाही पाकिस्तान में हो रही है। देखिए एयरपोर्ट के ऊपर इतनी सख्ती की हुई है, अगर सरहदों के ऊपर इतना अगर सख्ती की जाए तो मेरे ख्याल में लोग नहीं जा सकेंगे। क्या कहते हैं? नहीं, सरहदों से तो जाती हैं लोग, तो बाहर जाते हैं ना, सरहदों से नहीं, जो लोग डंकी के जरिए जाते हैं, पैदल सफर करते हैं, फिर आगे समुद्री सफर करते पाकिस्तान से तो बाहर ही निकलते हैं, ईरान भी जाते हैं, बाहर जाते हैं, बाकू जाते हैं, बाहर जाते हैं। हमारे यहाँ से तो डंकी के जरिए वहां एक कोयटा का रास्ता था जो ईरान से निकलते थे, वो अब बंद हो चुका है। वहां से लोग जाते हैं, ग्वादर की तरफ से चले जाते हैं, कश्ती में बैठ के ग्वादर, वीजा जेन्युइन होता है, उनको लीगल अब तो वो भी शोर मचाया हुआ कि जी कोयटा वाला जो रास्ता बंद है इसकी वजह से काफी नुकसान हो रहा है, इस रास्ते को खोला जाए। अगर खोला जाएगा तो फिर वो ड्रामा शुरू हो जाएगा। ड्रामा तो वही शुरू हो जाएगा, फिर लोगों ने जाना शुरू कर देना, आगे डंकियां लगनी शुरू हुई नहीं, फिर बंदे मरेंगे, फिर लाशें आएंगी। यहाँ पे जो हम लीगल लोग काम करने वाले लोग हैं, जो एक्चुअल काम करने वाले, वो सारे हम बर्बाद होकर बैठे हुए हैं। ये जो कश्ती डूबी, ये 1-2 दिन पहले की बात है, इतने लोग वहां पे गए, ठीक है, गैर मुल्की भी थे, पाकिस्तानी भी थे, और शहीद हुए सारे, उसका जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट है या वो खुद है? नहीं जी, बिल्कुल इसमें गवर्नमेंट के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं आता, गवर्नमेंट के ऊपर कोई इल्जाम नहीं आता। इल्जाम आता है उनके पेरेंट्स के ऊपर जो अपने बच्चों को भेजते हैं। बच्चा तो 20-25 हज़ार का भी जो है ना साथ नहीं लिखता कि मैं 20-25 हज़ार किसी को दे के तो मैं बाहर चला जाऊं। उसके वालिदैन ने लाखों रुपए देने होते हैं एजेंट को जाके, ठीक है, कि हमारे बच्चे की ये मौत खरीदो और ये हमारा बच्चा मरवा के हमें डेड बॉडी भी वापस ना मिले, लेकिन इसको बाहर भिजवा के से मरवा दो बस। ये टोटल गुनाहगार है उनके वालिदैन। अब दुख होता है उनकी माओ के हालात देखें, उनकी बहनों के हालात देखें, उनके घरों में क़यामत बर्पा हुई है, ठीक है ना। और वो गलती करने वाले वो खुद हैं। क्यों देते हैं एजेंटों को पैसे? क्यों एजेंटों को बच्चों की मौत खरीदते हैं एजेंटों के आगे उनको डाल के बच्चों को? इल्जाम भी एजेंट के ऊपर लगाया जाता है। एजेंट तो जाहिर है एजेंट इनके घर तो नहीं जाता ना लेने के लिए, ये खुद एजेंट के पास जाते हैं, खुद एजेंट कहते हैं जी हमारे बच्चे को इस रास्ते से भेज दो। क्या है कि वो दूसरा जो है ना बाहर का वीजा, पाकिस्तान में कोई एम्बेसी आपको वीजा देने के लिए तैयार नहीं है। अगर वीजा दे देती है तो आप यहाँ से एयरपोर्ट से वैसे नहीं जाते, यहाँ से चले जाते तो आगे से बंदा डिपोर्ट कर देते हैं वो, और अल्टरनेट यही ढूंढते हैं वो नेगेटिविटी जो है ना, इनलीगल वे यही है कि डंकी लगाओ और बच्चे को यूरोप तक किसी भी वे से भिजवा दो, यूरोप तक भिजवा दो। अब तो यानी कि जाना बहुत मुश्किल हो चुका है फिर जी, अब जाना तो बहुत मुश्किल हो चुका है। जब तक ये कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे, कोई प्लान नहीं करेंगे, तो ये समझ लें कि ये जितने ट्रैवल एजेंट हैं, जितने वीजा कंसल्टेंट हैं, वो सारे के सारे इस वक्त बर्बादी के कटहरे पे खड़े हुए हैं। और अभी इतनी FIR होनी है, FIA में इतनी FIR होनी है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। और वो उसका टोटल जिम्मेदार होगा डिपार्टमेंट, जिनकी ये नेग्लिजेंसी की वजह से जो लीगल लोग हैं उनको नहीं ये भेज रहे। अपना डिजाइन चेंज करें, अपना जो है ना अपनी स्ट्रेटजी चेंज करें, उसको किसी ऐसे तरीके से मोटिवेट करें यार जिनके वीजे ठीक है। मिनाज साहब इसके ऊपर बात करेंगे। अब जो सऊदीया ने जो फैसला किया है, काफी लोगों को बाहर निकाला, उन्होंने 200 से काफी और भी लोग थे वहां पे जो बेदखल किया, पाकिस्तान भेजे, इसके ऊपर बात करेंगे वजह क्या बनी, तो इसे शामिल करते हैं ब्रेक। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। It's me, Jia. This is my Street Vibes. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. इस वक्त फूलनगर शहर की सब्ज़ मंडी में खड़ा हूँ और इस वक्त गर्मी के फलों में
बहुत ज़्यादा फल हैं, लेकिन तरबूज एक ऐसा फल है कि जो अपने जायके और खुशबूदार और मिठास की वजह से सबसे ज़्यादा मशहूर है। वैसे तो इस वक्त सेब, आड़ू, अमरूद, खुरमानी, लुगाट भी हैं, लेकिन वो महंगे फल हैं जो कि गरीब आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बहुत ज़्यादा हैं। गरीब आवाम उन फलों को नहीं ख़रीद सकी, लेकिन तरबूज एक ऐसा फल है कि जो कम कीमत में 40 रुपये किलो के हिसाब से आवाम इसे ख़रीद रहे हैं और बड़े ज़ौक़ शौक़ से इसे खाते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तरबूज फल बहुत अच्छा है, मौसम के लिहाज से जायका भी अच्छा होता है, मीठा भी अच्छा है और ये बाकी फलों की निस्बत जायके में अच्छा है और ये हमेशा जो है ना मौसम के लिहाज से इसको खाना चाहिए, बेहतरीन फल है। और हम ये गाड़ियों के हिसाब से आते हैं, हर रोज़ 1 गाड़ी 2 गाड़ी सेल करते हैं, जिसमें 80 मन 50 मन ऐसे वज़न होता है। तो ये तरबूज आपसे लोग शौक़ से ख़रीदते हैं? माशाल्लाह शौक़ से ख़रीदते हैं। ये देखिए आपने कि इस गर्मी के मौसम में लोग सेहत अफ़ज़ा और खुश जायका तरबूज बड़े शौक़ से ख़रीद रहे हैं और खा रहे हैं। मेरा भी आवाम को ये मशवरा है कि इस गर्मी के मौसम में सबसे सस्ता फल तरबूज है, ये इस्तेमाल करें और सेहतमंद रखें। कैमरा टीम गफ़ार अहमद के हमरा डॉक्टर लियाकत अली, साउथ एशिया ग्लोबल न्यूज़, फूलनगर। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे सऊदी अरब की और काफ़ी पाकिस्तानियों को उन्होंने पाकिस्तान भेज दिया। वजह क्या बनी? मिनाज साहब क्या कहेंगे, क्या वजह सऊदी अरब बनी? में आप 200 से ज़ायद आप लोग 200 वापस आ गए हैं। जी, आप 200 बंदे की बात कर रहे हैं। 200 बंदे का इशू नहीं है, वहां पे तो कम से कम 6000 बंदा गिरफ्तार है, उनकी जेलों में बैठा हुआ पाकिस्तानी। यही तो पाकिस्तान में हमारी बदनामी का बायस बनते हैं ये लोग। ये वहां पे जाके जो भीख मांगते हैं ना, उम्रे का वीजा लगवाया, वीजा अभी उन्होंने पॉलिसी खोली थी साल का मल्टीपल वीजा की, इतना वीजा लगा साल का मल्टीपल, लोग जाके बैठ गए हैं। अब वो वहां पे उन्होंने भीख मांगनी शुरू कर दी। वो खाली पाकिस्तानी तो नहीं वहां पे जाते ना, पूरी दुनिया वहां पे इकट्ठी होती है और वो करोड़ों रुपए वहां से भीख की शक्ल में इकट्ठा करके तो पाकिस्तान भेजते हैं वो लोग। नहीं तो एक्शन क्यों? अब तो एक्शन लेना चाहिए ना। एक्शन सऊदी गवर्नमेंट ने लिया ना, तो उनको गिरफ्तार किया। बल्कि देर बाद क्यों एक्शन लिया? फिर तो फौरन करना चाहिए था जब ये सिलसिला शुरू हुआ। उनको भी पता होता है कि यार कौन ओरिजिनल है, यार कौन दो नंबर है। ये साल 1.5 साल पहले का उन्होंने एक्शन लिया हुआ है। पाकिस्तान गवर्नमेंट को उन्होंने लेटर भी भेजा है कि अगर तुमने ये बेकारी भेजने बंद ना किए तो मैं पाकिस्तान पूरे को ब्लैक लिस्ट कर दूंगा। तुमको उम्रे के वीजे तो क्या वर्क वीजे भी देने हम बंद कर देंगे। पाकिस्तान को फिर उन्होंने वादा किया जी हमारी तरफ से कोई इस तरह का बंदा नहीं आएगा, अगर कोई आता तो उसको आप सजा देके वापस भेजें। तब जाके ये बंदे गिरफ्तार हुए हैं और उनको सजाएं देके 200 बंदा जो आप कह रहे हैं ना, वो तो रूटीन वाइज बंदे आ रहे हैं ना बाहर। वहां पर 6-7 हजार बंदा बेकारी पकड़ा हुआ उन्होंने। ठीक है, अगर वो बेकारी है, ठीक है, आप जैसे जिक्र कर रहे हैं, तो फिर वापस कैसे आएंगे? उनका क्या तरीका? वो डिपोर्ट होकर वापस आएंगे, ब्लैक लिस्ट होके आएंगे, लाइफ टाइम नहीं जा सकते वो। फिर उनके बच्चे जाएंगे। ये काम खत्म नहीं हो सकता, तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक हमारी बुनियाद मजबूत नहीं होगी। तो बुनियाद मजबूत होगी? बुनियाद मजबूत होती है कौमों से। कौम के जो लीडर हजरात होते हैं ना, वो बुनियाद को मजबूत करते हैं। उनकी अपनी बुनियादी इतनी खोखली है कि पाकिस्तान में तो उनकी बुनियाद है ही कोई नहीं। पाकिस्तान में तो उनका कब्रिस्तान है, वो तो सिर्फ मरते हैं, उनकी डेड बॉडी पाकिस्तान आती है, बाकी उनके बच्चों की नेशनलिटियां, उनके बिजनेस, उनके जितना रेवेन्यू वो सारा बाहर है। यहाँ से तो वो एक बिजनेस प्लेस है, कमाते हैं, सारा बाहर ट्रांसफर कर देते हैं, टेंडर भरते हैं, अपनी गवर्नमेंट लेते हैं, 4 साल पूरे मुल्क को निचोड़ते
हैं, लूटते हैं, फिर वो जाके दूसरे ये की जो बारी इतना आती है। बड़ा माफिया है, इसको लगाम क्यों नहीं दी जाती, क्या वजह है? देखिए, भुट्टो साहब आए, ठीक है, जिया साहब ने उनको फांसी दे दिया। नवाज शरीफ 4 बार प्राइम मिनिस्टर बने, चारों बार एंटी एस्टेब्लिशमेंट वो उनको उतार दिया गया। उनके जो पीपल्स पार्टी है साहब है, ठीक है ना। अब मुझे बताएं, ये चारों पार्टियां कहती हैं हम मुहिबे वतन है, हम मुहिबे वतन कहें और हम इस कौम के लिए कुछ करेंगे और करके जाएंगे, हमेशा वादा करते हैं। तो ये चारों अगर इतनी गैरतमंद पार्टियां हैं, इतनी ये गैरतमंद लोग हैं, गियोर लोग हैं, तो ये चारों मिलकर पाकिस्तान का सारा कर्जा खुद उतार के पाकिस्तान को स्टेबल क्यों नहीं कर लेते? मुझे ये बताएं। ये तो बहुत मुश्किल है, एक बंदा बहुत मुश्किल है। जरदारी कर सकता है अगर करना चाहे तो। एक बंदा चाहे तो वो कर्जा एक बंदा उतार सकता है। पार्टी तो बहुत बड़ी बात है ना, एक बंदा कर्जा उतार सकता है, लेकिन ये इंसानों की शक्ल में पाकिस्तान को भेड़िए चिपटे हुए हैं जो हमें नोच नोच के हमारा खून निचोड़े, वेलने से निकाल रहे हैं, गन्ने के जो रो वाला वेलना नहीं होता उसमें से निकाल रहे हैं स्वाम को और निचोड़ जोड़ के अपने बाहर जाके असासे बना रहे हैं ये लोग। इसलिए हम लोग नेगेटिव की तरफ जाते हैं। किश्ती के जरिए चले जाओ, डंगी लगा के चले जाओ, पैदल चले जाओ, लोग किस ममालिक का रुख करते हैं? वजह सिर्फ और सिर्फ हमारे लीडर हजरात लोग हैं जो पाकिस्तानी अवाम, वो बहुत मुश्किल होना, ठीक वो ठीक नहीं होना। तो अगर वो बहुत मुश्किल है, वो ठीक नहीं होता भाई, करप्शन भी ठीक नहीं होगी। अब करप्शन इतना बड़ा जन्म लेगी, ट्रैवल एजेंट सारे बर्बाद हो गए, उनके जो अयाटा के लाइसेंस है वो सारे रुके, उनको टिकट नहीं बननी क्योंकि उन्होंने 200 बंदे की टिकट बनाई थी उम्र की, वो सारी की सारी जाया हो गई हैं। अब वो नई टिकट कहां से बनाएंगे? 10,000 रुपया 5,000 रुपया कमाई है टिकट के पीछे, एक एजेंट को उम्र का वीजा देके टिकट देके 5 से 10,000 मैक्सिमम कमाई होती है। अब मुझे बताएं, 5-10 हजार में 4 बंदे इन्वॉल्व है जिनका आपस में उन्होंने बांटना होता है। हाँ। वो बंदे अगर 2 करोड़ की टिकटें जाया करके बैठ जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? मुझे सिर्फ ये बता दे आप, वो कहाँ से उनको भेजेंगे? उम्रे वालों को, हाजियों को कहाँ से भेजेंगे उम्रे के ऊपर? ये सारी करप्शन आएगी, उनके गोलियां भी चलेंगी, बंदे मरेंगे भी। अभी गुजरांवाला में देखे कितना बड़ा एहतजाज किया इन्होंने। गुजरांवाला के काफी लोग भी थे, जो हादसा हुआ इसमें काफी लोग नहीं, वो उसी पट्टी के लोग थे। गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, गुजरात, डींगा, ये सारे उसी तरफ के लोग हैं हाफिजाबाद के। बाकी लाहौर का कोई बंदा भी नहीं जाता, ना कराची का था ना लाहौर का था। मिनाज साहब, ये कश्ती के जरिए किस ममालिक में जाते हैं, कौन सा मुल्क जो जाते हैं उनके लिए बेस्ट हो? देखिए, बेस्ट वाली बात नहीं है, कोई भी उनको मुल्क मिलना चाहिए। देखिए, जो वहां से मराकश से जाती हैं या मुल्तानिया से जाती हैं, वो जाते हैं सारे स्पेन, उसके नियर अबाउट स्पेन ही है। जो इधर से जाती हैं लीबिया से, कुछ जाती हैं कश्तियां यूनान जाती हैं, कुछ जाती हैं यहाँ पे इटली, ठीक है ना। अब इटली का भी काम चल रहा है, यूनान का भी काम चल रहा है, मुल्तानिया से भी लोग चल रहे हैं। तो जब इनके अपने वहां पे सेल बने होंगे, बॉर्डरों के ऊपर, 0 पॉइंट के ऊपर इनकी अपनी टीमें बैठी होंगी, तो कौन एजेंट वहां पे काम करेगा? कोई नहीं करेगा। बस ये है बात, बुनियादी बात ये है कि ये अपनी टीमें तश्कील दें, बजाय इसके कि अपने एयरपोर्टों पे जो लीगल लोग जाने वाले उनको भी बर्बाद कर रहे हैं और पाकिस्तान का रेवेन्यू सारा खाना खराब कर रहे हैं। देखिए, एक बंदा है, उसका विजिट वीजा है, वो खेपिए का काम करता है। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, वो खेपिए का काम करता है, डेली वो जाता है दुबई, वो डेली जाता है थाईलैंड से पान लेके आता है, सुपारी लेके आता है, ठीक है, आगे यहाँ पे बेचता है, क्योंकि पान के पत्ते की लिमिट होती है ना, उसकी एक्सपायरी होती है 2 से 3 दिन 4 दिन, वो डेली उन्होंने लेके आनी है, लेके जानी है उन्होंने, ठीक है ना। यहाँ से सामान ले जाते हैं वहाँ। अब उन बंदों को भी नहीं जाने दिया जा रहा, वो अपने बच्चों को कहाँ से पालेंगे? मुझे बताएं, बर्बादी तो होगी, करप्शन तो फैलेगी ना। फिर ऐसे ही इस करप्शन को रोकने के लिए इनके अपने वहां पे जो बॉर्डर है, कश्ती उल्टी वो है, दूसरे मुल्कों में इन्होंने एंट्री बंद कर दी है। भाई, अफ्रीका को बंद करो ना, जहाँ पे काम हो रहा है उसको कंट्रोल करो। अब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कमेटी बनाई, ठीक है, और अपने ख्याल 5 बंदों की कमेटी है और बाहर के मुल्क चली भी गई है इसके ऊपर काम करने के लिए। क्या ये कमेटी कामयाब हो पाएगी? इसके ऊपर फोकस कर पाएंगे रोकथाम के लिए? खाली एक कमेटी बनाई है जो मुल्तानिया गई है, मुल्तानिया को तो खाली काम नहीं, और सेनेगल से भी काम हो रहा है, लीबिया से काम हो रहा है, सूडान से भी काम हो रहा है, मराकश से भी काम। मराकश का 1 घंटे में वीजा मिल रहा है। क्यों दे रहे हैं वीजा? वीजा बंद कर दें, वो ना दें वीजा। फिर वो कौन सी टूरिस्ट प्लेस है? सेनेगल कौन सी टूरिस्ट प्लेस है? या वो जो मुल्तानिया, ये कौन सी टूरिस्ट प्लेस है? अब टूरिस्ट थाईलैंड है, दुबई है, मलेशिया, सिंगापुर है, उधर भी नहीं बंदे जाने दे रहे। जो बिजनेसमैन है, जो रोजाना आने जाने, बिजनेस तो रुक गया, टूरिज्म भी बर्बाद। ये जो कमेटी गई है, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? आपका क्या तज्जिया कहता है? देखिए, कमेटी का रिजल्ट तो उनकी जो फिजिबिलिटी वो बना के लाएंगे। चाहिए तो ये था ना कि वहां पे बैठ के जो एजेंट हजरात काम कर रहे हैं, ठीक है ना, उनको वहां पे जाकर उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनकी गवर्नमेंट से मिलके वहां पे जाके जितना चैनल था उनके साथ एक एग्रीमेंट हो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कि यहाँ पे कोई भी पाकिस्तानी इस तरह की एक्टिविटीज में अगर पकड़ा जाता है तो उसको वहीं पे पकड़ के उसको 10 साल सजा दो। तो 2-3 बंदों को सजा देने की देर है, कोई बंदा नजर ही नहीं आएगा आपको।
जब यहाँ से लोग जाते हैं, एक कश्ती में कितने लोग सवार होते हैं? बस कश्ती में तो भाईजान 200-300 बंदा होता है। बड़ी कश्ती हो कि छोटी? नहीं, वो डिस्पोजेबल कश्ती होती है। वो ये कैसे? खुद ही इन्होंने बनाई होती है, इंजन लगाया होता है, वो कश्ती उन्होंने डिजोल्व करनी होती है जाके वहां पे। कश्ती छोड़ देते हैं और आप खुद उतर जाते हैं? ठीक है। कश्ती डिस्पोजेबल तैयार होती है, इंजन लगाए होते हैं उसके ऊपर, वो इंजनों की शक्ल में वो आगे लेके जाती है। नहीं, आगे कोई गाइड करने वाला भी तो होगा ना, कोई कहाँ से जा रहे हैं? ना पैसेंजर ही गाइड होते हैं। गूगल मैप होता है, गूगल मैप के जरिए जा रहे हैं वो। नहीं, समंदर में देखे ना, नेटवर्क का इशू भी तो आ सकता है। वो गूगल मैप ही उन्होंने जाना है, और उसके अलावा उनके पास कोई वे नहीं होता, कोई रूट नहीं होता, कोई सेटेलाइट नहीं उनको ऐसी होती है जो डायरेक्शन उनका मोबाइल उनको दे रहा होता है कि हमने इस रूट पे जाना है और इसी तरह हमने जाना है, सीधे जाना है। वो तो जब रेस्क्यू आके उनको बचाती है तो कुछ लोग बच जाते हैं, वरना तो कोई भी ना बचे। अब ये जो मुल्तानिया वाली कश्ती डूबी है, उसको मछेरे आए हुए थे पकड़ने के लिए, वो एक बंदे ने वहां से वो चलाया, वहां से फायर किया ऊपर, जो शुलिया होती है ना, रेस्क्यू फायर जो होता है, वो उसने चलाया है, तो वो पता चला कि यार यहाँ पे कुछ है, वो आए हैं मछेरे, उन्होंने कहा ये हमें तो बंदों को मारा जा रहा है। वो उन्होंने आगे कश्ती को बचाया, बंदों को जिन्होंने छलांगे लगा के जान बचाई ना, उनको फिर निकाला। वो कुछ चंद लोग बचे जिन्होंने आके इंटरव्यू दिया। नहीं, वो भी बस अल्लाह ताला की तरफ से बच गए हैं। जो तैरने वाले लोग हैं वो भी बड़ा मुश्किल से बचते हैं। समंदर है, किनारा कोई भी नहीं है उसका। बात ये है कि जो मर गए उनका क्या करें? उनकी माओ से पूछे जाके, उनकी बहनों से पूछे, उनके भाइयों से पूछे, उनके बाप से पूछे जिन्होंने खुद अपने बच्चे की मौत खरीद के एजेंट को दी है। क्यों भेजती हैं उधर बच्चों को? कोई एजेंट इनके घर तो नहीं जाता ना, ये खुद बच्चों को आप भेजते हैं, हमारे बच्चों को आप इस रास्ते से भेजिए। आगे 5 गए होते हैं इनके, वो कह रहे हैं यही रास्ता ठीक है, ऐसे रास्ते तो बच्चे साढ़े ले जा फड़ पैसे। मैं इस चीज पे हैरान हो रहा हूँ, जैसे आपने जिक्र किया कि कश्ती चलाने वाला कोई नहीं होता, सिर्फ जो पैसेंजर होते हैं उसको गाइड किया जाता है, भाई आपने ये मैप है, आपने जाना है इस रास्ते पे, वो भी नया होता है, उसी को ट्रेन किया जाता है, उसी को ट्रेन किया जाता है, उसी को ट्रेन। मुझे देना कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, तो ये जितना भी ये कश्ती का काम करने वाले लोग हैं, मुझे ये एग्रीमेंट दें, मैं इनको बताता हूँ, मैं डिजाइन करके कहता हूँ कि एक भी बंदा अगर कश्ती से चला जाए तो मुझे ना सरेआम फांसी दे दी जाए। इनके पास स्ट्रेटेजी कोई नहीं है, ये रोकते नहीं इस बात को। जो पैदल का जो सफर होता है वो कितने दिन का होता है वैसे? कहाँ से शुरू होता है? पैदल का सफर नहीं होता कश्ती में, पैदल का सफर नहीं, कश्ती की बात नहीं कर रहा। जैसे कि मैं अभी यहाँ से गया, क्वेटा गया, पहाड़ों में चलना पड़ता है, फिर जाके आगे क्रॉस करनी पड़ती है। क्वेटे से पहाड़ों में नहीं चलना पड़ता, क्वेटे से तो आपने बॉर्डर क्रॉस करना है ना ईरान का। ईरान से बॉर्डर क्रॉस करके बस पे बैठना सीधे आपने। नहीं, बॉर्डर कैसे क्रॉस करते हैं? बॉर्डर क्रॉस करने के लिए तो आपको पता है बड़ी मुश्किलात होती है, वहाँ पे सारी चीजें लगी होती हैं, कैमरास लगे होते हैं, सिक्योरिटी होती है। बाइक के ऊपर पीछे से जाके बॉर्डर क्रॉस करवा देते हैं वो। इनके पास बड़े रास्ते हैं सर जी, जिसने डग्गी लगानी उसके पास बेशुमार रास्ते हैं, 4-4 घंटे पैदल चलाते हैं साइडों से। तो फिर ऐसे वादे किए जाते हैं कि जी हमारे सरहदें तो बड़ी मजबूत हैं, फिर दुश्मन भी आ सकता है सरहदें पार करके। एक आम आदमी जा रहा है क्रॉस करके, तो वो जा रहे हैं, तो वो क्यों नहीं आ सकते? रेगुलर आते हैं। जो ये आपका जर्दान जो बॉर्डर है, ये पाकिस्तानी उधर जाते हैं, ईरानी इधर आते हैं, रोजाना आना जाना ट्रांजैक्शन उनकी, बिजनेस, कोई वीजा नहीं, कोई कुछ नहीं चाहिए उनको, गाड़ी जाती है। अमेरिका ने भी लोग निकाले हैं काफी लोग, इसके ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन शामिल करते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are. Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life.
Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs and it's cold as well. वेलकम बैक नाज़रीन। सऊदी अरब के बाद अब अमेरिका ने भी फैसला किया है कि जितने पाकिस्तानी हैं और उनको पाकिस्तान भेजा जाए। इसके ऊपर बात करते हैं। ना सब क्या कहेंगे, सऊदी अरब के साथ अब अमेरिका का भी बयान आ गया जिनको भी बाहर निकालने पाकिस्तानी को, वहाँ पे यही काम शुरू हो जो देखिए नहीं, थोड़ा सा मैं आपसे इख्तिलाफ करूँगा इस बात पे। उन्होंने पाकिस्तानियों को बाहर निकालने का नहीं कहा। कई लाख पाकिस्तानी वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, जॉबें कर रहे हैं। उन्होंने उन लोगों को कहा बाहर निकाले जो लोग वहाँ पे भीख मांगते हैं और पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनते हैं। ठीक है, उन लोगों का उन्होंने कहा सख्त इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए उनके मुताबिक, क्योंकि उनकी वजह से हम लोग परेशान है। यहाँ पे हमें लीगल तरीके से भी वहाँ पे नहीं जाने दिया जा रहा। वर्क परमिट लगे हुए हैं, यहाँ से एयरपोर्ट से नहीं उनको जाने दिया। अगर 3 दिन पहले वर्क परमिट लगवाए हुए हमने, बंदों के प्रोटेक्टर हुए हैं, वर्क वीजे हैं, उनको भी नहीं जाने दिया लाहौर एयरपोर्ट। अमेरिका में कितने लोग समझते हैं कि जो लीगल तौर पे ठीक हैं, वहाँ पे गए हुए अपना बिजनेस कर रहे हैं, सारा कुछ हो? अमेरिका नंबर 1 मुल्क है सर। अमेरिका दी बेस्ट है। अमेरिका माई बाप है, समझ लें। अगर उसे कहा जाए ना माई बाप, तो वो भी लफ्ज उसके लिए बड़ा मुनासिब और कम है लफ्ज। अमेरिका में देखें, लोग जाते हैं ब्राजील से डंकी लगाते हैं, 20-25 दिन में बंदे जाते हैं मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको से बंदे अमेरिका एंट्री लेते हैं। एंट्री लेके अमेरिका में बॉर्डर क्रॉस करते हैं। वो जो उसने दीवार बनाई, दीवार से भी वो क्रॉस करते हैं। क्रॉस करके उनकी चौकी बनी थी, चौकी में जाके बैठते हैं। हमने सरेंडर करना है, हम यहाँ पे आगे क्रॉस करके हैं। वो कहते ओके बैठो, उसको सिम देते हैं, कह रहे हैं अपने घर कॉल कर लो, बता दो कि हम यहाँ पे आ गए। सैलम अप्लाई करना है, ओके जी सैलम। उसका पासपोर्ट लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, उसकी हिस्ट्री चेक करते हैं। हिस्ट्री चेक करके उसको जो है ना, उसकी किसी भी जो उसका होता है ना वहाँ पे रिलेटिव होता है, उसको कॉल करते हैं, तुम्हारा ये बंदा यहाँ बैठा है, इसकी गारंटी दो। और उसकी कोई बस होती है, गाड़ी होती है, कोई ट्राला होता है, उसकी बुक लेके आता है, जैसे यहाँ पे हम चल के देते हैं। तो वो जनाब वहाँ पे आके उसकी जमानत देता है, वो उसको वहीं पे वर्क परमिट इशू कर देते हैं। वहीं पे उसको वर्क परमिट इशू कर देते हैं। अमेरिका तो दी बेस्ट है सर जी, अमेरिका तो क्या बात है। और वहीं पे वो लड़के गए हुए हैं। हमने मैक्सिको के डायरेक्ट वीजे दुबई से लगवा के लड़के भेजे हैं। मैक्सिको लड़के काम गए हैं, उन्होंने 2-3 महीने गुजारे, बाद में अमेरिका जाके सरेंडर किया है। आज वो लड़के वहाँ पे पासपोर्ट होल्डर बने हुए हैं। और अल्लाह का शुक्र फर्ज करें कि आप लोग यहाँ से भेजते हैं, ठीक है, लीगल तरीके के साथ सारा कुछ होता है, हमारा सिर्फ बाहर का काम है। हाँ, भेजते हैं आप लोग जहाज के जरिए, जो भी है। वहां जाके आगे कोई 2 नंबरी हो जाती है, फिर आपके ऊपर केस नहीं। हमारा तो इसमें लेन देन कोई नहीं है ना, हमारा ताल्लुक कोई नहीं है। हमने तो जितने काम करना है उतने हमने पैसे ले लिए। आगे जाके अगर वो अपनी गलत एक्टिविटीज में जाता है तो उसकी अपनी लाइबिलिटी है, वो पकड़ा जाता है। वो कोई गलत हरकत करता है, कोई डंकी लगाता है, तो हमने तो उसे डंकी नहीं। अगर नाम लिया जाता है कि जी फर्ज करें, जाहिर नाम तो मिनाज साहब ने मुझे भेजा है, पासपोर्ट भी है, सारा कुछ है, आपको कॉल आएगी, फिर हमें बताएं कि इसकी जी हम फिर बताते हैं कि हमने सर ये वीजा लगवा के दिया है, ये वीजा लगवाया, इतने पैसे लिए हैं, हमने लीगल वहां तक भेजा। आगे इसने अपनी मर्जी से किसी एजेंट के थ्रू गए से पूछ रहे हैं, इसलिए हमें पैसे दिए या हमने इससे कोई पैसे लिए हैं, तो ये फिर जाके हम देते हैं जवाब उनके सवालों का। ओरिजिनल वीजा लेना हो किसी भी मुल्क का, प्रोसेस क्या है इसका? उसका प्रोसेस तो सर उसका फाइल वर्क होता है कि आपका अपना यहाँ का बिजनेस शो करें, अपनी पूरी प्रोफाइल बताएं, वहां से एक स्पॉन्सर मंगवाएं, किसी भी कंपनी का मंगवा लें, बिजनेस स्पॉन्सर मंगवा लें, इवेंट का स्पॉन्सर बुक कर लें, ठीक है, होटल बुकिंग होती है, उसके मुताबिक आप वीजा जमा कराएं, आपको वीजा मिल जाएगा। बिजनेस किस टाइप का होना चाहिए, हाई लेवल का या फिर बिजनेस किसी भी आपकी जो बेस
ये भी चेक करते हैं ना कि यार इसके पास बैंक बैलेंस है नहीं है क्या, वो आपका डिपॉजिट चेक करती हैं। 2 मिलियन से प्लस डिपॉजिट है तो फिर वीजा मिलने कितने मिलियन का? 2 मिलियन से 2 मिलियन का। अच्छा, उससे प्लस अगर है तो फिर आपको वीजा मिलने के चांसेस होते हैं, अदरवाइज वीजा नहीं देते। अगर 2 मिलियन नहीं है तो फिर नहीं, वीजा नहीं फिर देते, वो उनकी पॉलिसी है ना। वो तो फिर बंदा पाकिस्तान में ही रहे। फिर अभी देखे ना, अमेरिका ने बड़ी अच्छी पॉलिसी निकाली है पाकिस्तान के लिए। कौन सी पॉलिसी निकाली? पाकिस्तान के लिए उन्होंने वीडियो ओपन किए हैं। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान से वो अमेरिका बंदे निकाल रहे हैं। अमेरिका वही इनलीगल बंदों को निकाल रहा है, जो भीख वगैरह मांग रहे हैं उनको निकाल रहा है। वहाँ पे अमेरिका में क्या भीख मांगनी, अमेरिका में कमाई इतनी है, अमेरिका भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, हमारे पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ, जैसे सऊदी अरब में काम किया, पाकिस्तानी गल्फ में जाके भीख मांगती है, वहाँ पे भिखारी कैसे चला जाएगा? वहाँ पे तो जाने का रेट भी करोड़ों करोड़ रुपया रेट है। ये आसान वे ढूंढती है जो हमारे भिखारी हजरात है। अच्छा, अब जो नए वीज़ों का जो वो इन्होंने किया है, प्रोसेस किया है, इसका क्या प्रोसेस है? ये पाकिस्तान को वीज़े दे रहे हैं। अब ये कनाडा ने बड़ी अच्छी पॉलिसी निकाली है, वर्क परमिट दे रहे हैं 5 साल का बंदे को, $24 पर आवर सैलरी है। बड़ी अच्छी पॉलिसी पाकिस्तानी के लिए निकाली उन्होंने। अप्लाई कर रहे हैं हम, उनका भी काम हम अप्लाई कर रहे हैं, जा रहे हैं बंदे इंशाल्लाह, अप्लाई किए हैं, वीज़े लगेंगे। कितने का वीज़ा लगता है वैसे? तो क्या हम जो ले रहे हैं, हम तो बहुत कम पैसे ले रहे हैं सर। कितने? हम तो कंसल्टेंसी चार्ज कर रहे हैं बस अपनी, 15 लाख 20 लाख? नहीं, हम ले रहे हैं सिर्फ 2 लाख रुपए कंसल्टेंसी चार्जेस। ठीक है, उसके प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस करने का। उसका स्टडी वीजा होगा या फिर? नहीं, स्टडी नहीं, वर्क वीजा होगा। वर्क वीजा होगा। उसमें भी उनकी जो पॉलिसी है उसमें 2 मिलियन प्लस उसका डिपॉजिट पड़ा होगा, तब उसे वीजा मिलेगा, वर्क वीजा, वरना नहीं मिलेगा। वरना नहीं मिलेगा। ज्यादातर लोग कहाँ पे जाना चाहते हैं? यूरोप में जाना चाहते हैं? ज्यादातर लोग तो अमेरिका ही जाना चाहते हैं, नंबर 1 कंट्री जो है दुनिया की। नहीं, जिसकी अब ताकत नहीं है बेचारे के, आपने कहा ना कि 2 मिलियन है वो जा सकते, तो पैसा नहीं है जिसके पास कम पैसे, तो वो तो फिर जाहिर सी बात है सऊदी का रुख करता है या फिर कहीं भी। ज्यादा लोग तो यूरोप ही जाते हैं ना, क्योंकि यूरोप में डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं ना। वो जिस वे से भी जाए उन्होंने यूरोप ही जाना है। उन्होंने कहना जी हमें ईरान से भेज दो, हमें सेनेगाल से भेज दो, हमें मराकश से भेज दो, हमें मुल्तानिया से भेज दो, लीबिया से, हमें जाना यूरोप ही है। नहीं, आप सर यूरोप का जिक्र कर रहे हैं, शायद आप में चक्कर लगा होगा यूरोप का। मैं आता जाता रहता हूं। हाँ, तो यूरोप की क्या सूरत हाल है? आप इतनी तारीफें कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो भी कहता है जी यूरोप जाना है, चाहे वो मैं मर भी जाऊं, मेरी लाज है, यूरोप जाना है। मैंने क्यों? उसकी वजह ये, उसकी वजह क्या है, क्यों लोग रुख करते हैं? उसकी वजह ये कि हम जो है ना, हम जानवर सिर्फ लोग हैं, ठीक है, और वो इंसान है। हमारा उनका ये इतना बड़ा फर्क है कि हमारा जो कंपेयर किया जाए तो हम जानवर सिर्फ हैं, अगर उनको देखें तो इंसानियत उन्हीं से लोगों से शुरू होकर उन्हीं पे खत्म हो जाती है। बिल्कुल, इसलिए लोग जाते हैं वहाँ पे कि लाइफ को जो है ना पुरसुकून वहाँ पे गुजारा जाए, और अब बाकी जो पीछे बका हमारी बची है ना, उनको सर्वाइव हम कर सके वहाँ बैठ के। यानी कि एक मंथ में आदमी कितना कमा सकता है वहाँ? एक मंथ में लड़के मैंने भेजे थे, पहले तो उनकी लगी 800 यूरो तनख्वाह लगी, अब वही लड़के जो है ना 2500 यूरो 3000 यूरो महीने का कमा रहे हैं। कितना बनता है पाकिस्तानी? अराउंड अबाउट 9 से 9.5 लाख रुपए महीना बनता है। तो थोड़ी सैलरी नहीं है सर, किसी घर में 8-9, अगर वो बीच में से 1-2 लाख खा भी जाता है तो 8 लाख 7 लाख भेज रहा है घर पे वो। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी घर का किचन 7 लाख से रुक जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से चल सकेगा, कोई इशू नहीं। लोग वहाँ पे जाके सर्वाइव कर लेते हैं सर। जो लोग 2 नंबरी से जाते हैं फिर वापसी भी तो आना होता है उन्होंने? नहीं, फिर वो वहाँ से डॉक्यूमेंट्स बनवा के आते हैं। वो कैसे बनते हैं? वो तो फिर इमिग्रेशन असाइलम अप्लाई करते हैं ना, अपना केस लगाते हैं वो। कुछ लोग पेपर मैरिज कर लेती हैं, कुछ लोग लॉयर कर लेते हैं, लॉयर के थ्रू अपना केस अप्लाई करके वर्क परमिट ले लेते हैं, पैसे देते हैं जो उनके चार्जेस होते हैं, बताते हैं कि हम इससे इनलीगल वे से आए लेकिन हमारी मजबूरी थी, क्योंकि पाकिस्तान के हालात नहीं थे आने का, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमने ये रास्ता अडॉप्ट किया। उनको वो लोग इंसान है सर जी, वो भेड़िए नहीं है। देखें ना, अगर हमारे पास कोई आता है पाकिस्तान में 2 नंबरी के साथ, हम तो कहते हैं सीधा जेल में जाएं भाई आप, ठीक है, एक्शन लिया जाता है। तो वहाँ पे इतनी आज़ादी है वहाँ पे? वो बिल्कुल आज़ादी है। मैंने बता रहा वो इंसान है, हम जानवर हैं। ये इससे बड़ा लफ्ज़ क्या होगा मुझे बताएं, कोई है इससे बड़ा लफ्ज़? नहीं। तो आप खुद एंकर हैं, आप पूरी दुनिया को सर्च करते हैं, पाकिस्तान को आप डील कर रहे हैं, पब्लिक डीलिंग आपकी बड़ी अच्छी है लोगों के साथ, आपको हालात नहीं पता पाकिस्तान के क्या हालात हैं। बहुत बुरे हालात हैं। हमारा वज़ीर-ए-आज़म तो कहता है कि अब मेशत बेहतरी आ चुकी है। अभी वीज़े ओपन होंगे तो सबसे पहले आप अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे कि मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाऊँ पाकिस्तान से। तो काफी लोग अभी सोच रहे हैं, भले आप यहाँ 3 लाख 4 लाख सैलरी ले रहे हो, लेकिन आपने सबसे पहले मिनाज पे मेरा वीज़ा लगवाया, मैं तो जाऊँ ना पाकिस्तान से। क्यों जाते हैं फिर आप लोग, अगर इतना ही अच्छा है तो? ये सिर्फ हमारा सिस्टम जो है ना वो गलत है। पाकिस्तान से अच्छा मुल्क पूरी दुनिया में कोई नहीं है, खुदा की कसम। मैं 110 कंट्री घुमा हूँ, मुझे पाकिस्तान से अच्छी कंट्री लगी कोई नहीं है। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये कि हम यहाँ पे बादशाह हैं भाई, हम अपनी कंट्री के बादशाह हैं, हमारी सल्तनत के मालिक हैं हम। बाहर आपने काम करना है तो पैसा मिलना है, यहाँ पे तो आप 2-2 बजे सोए हुए उठते हो। ऐसा ही है। तो ये फैसिलिटी यहाँ वहाँ पे नहीं मिलेगी आपको।
यानी कि कानून है। लेकिन ये हमारे जो ऊपर वाले सिस्टम वाले लोग हैं ना, अगर वो लोग इंसान होना कभी, या ये पाकिस्तान को दे दें ठेके पे चाइना को, मैंने 2 बार पहले भी कहा, अगर पाकिस्तान को चाइना को दे देना ठेके पे, तो खुदा की कसम पाकिस्तान जो ना अपनी सीमत पे आ जाए। लेकिन इनकी अपने मुफादात खत्म होते हैं, इनकी अपनी दिहाड़ियाँ खत्म होती हैं, ये कहाँ से पे निकालेंगे ये पैसा इतना, अगर चाइना को दे दिया तो। नहीं, अभी तो कह रहे हैं कि चाइना के साथ मुआहदे हो रहे हैं हमारे, वो मुआहदे कर रहे हैं, सरमायाकारी आएगी पाकिस्तान में, पाकिस्तान की जो मैशत है उसमें बेहतरी आएगी। सरमायाकारी में ये कितने करोड़ों डॉलर ले रहे हैं, वो भी तो आप उसकी भी फिजिबिलिटी चेक करें ना, इसकी स्पेसिफिकेशन में जो है ना आप, कि कितने करोड़ों डॉलर रिसीव कर रहे हैं ये मुआहदे करने पे, उनको प्रॉपर्टी दे रहे हैं, यहाँ पे ये यूनिट लगाएं, ये लगाएं, वो लगाएं, तो वो सिर्फ इसी शक्ल में दे रहे हैं, ये कॉन्टेक्ट ये कर रहे हैं, उसके ऊपर भी हमें कितना बीच में से दो, हमारा कितना। आप देखें ना, आपका जो बिजनेस है, ठीक है, इंडस्ट्री है बिजनेस की, वो सारी बाहर शिफ्ट हो चुकी है। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास सोर्सेस नहीं है, लाइट नहीं है, गैस नहीं है, सारे जितने भी बिजनेसमैन बड़े हैं वो सारे बाहर शिफ्ट हो गए हैं। ये सारे सोर्सेज हैं हमारे पास, लेकिन वो हमें वो उसको वसाइल ही नहीं, हमारे पास मसाइल ही इतने हैं कि वो अब उनके वसाइल उस पर दब जाते जाके, वसाइल कम हो जाते हैं, मसाइल इतने ज़्यादा डाल देते हैं कि बंदा उन मसाइलों में दबा हुआ ना, मूव करके कहीं और जाके, कोई ईरान में जाके बैठा हुआ है, कोई बांग्लादेश में जाके बैठा हुआ है, कोई किसी ने जाके इंडस्ट्री लगाई हुई है गारमेंट्स की, उधर जाके। अब देखें ना, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं डिग्रियां हासिल करके आते हैं, वो कहते हैं क्या करें यार, इतनी की डिग्री हासिल हुई है, अब मेहनत की है, अब 25,000 जाके जॉब उसको मिलती है, 25-30,000 जाके, वो कहते हैं मैंने बाहर जाना है, बाहर जाना है, पाकिस्तान में रुकना ही नहीं है मैंने, बस वजह यही है, यही बात है। तो दूसरी तरफ कहा जाता है कि जी पाकिस्तान में तो बेहतरी आ चुकी है और जो महंगाई है उसका पैराग्राफ नीचे आ चुका है, 81% जो महंगाई वो नीचे आ चुकी है, ये हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब, कहानी है ना, और मरीम नवाज साहिबा कहती है कि 71% जो है ना महंगाई वो भी नीचे आ चुकी है। इसके ऊपर बात करेंगे, शामिल करते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। मई की धूप में जब हर तरफ गर्मी का राज होता है, ऐसे में कुदरत का ये जर्द तोहफा अमलतास न सिर्फ साया फराहम करता है बल्कि माहौल में रंगों की बहार भी ले आता है। अमलतास, जिसे सोने की झाड़ी भी कहा जाता है, न सिर्फ एक खूबसूरत दरख्त है बल्कि इसका तिबी इस्तेमाल भी अहमियत रखता है। इसके फल, जिसे मुकामी तौर पर सना कहा जाता है, कई यूनानी नुस्खों में बतौर दवा इस्तेमाल होते हैं। शहरियों का बात करते हुए कहना था कि जर्द रंग के फूल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, हम रोजाना कॉलेज जाते हैं तो इन्हें देखते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे दरख्त ज्यादा से ज्यादा लगाए। ये जर्द रंग के फूल बहुत खूबसूरत हैं और सुबह के टाइम जब हम आते हैं तो कॉलेज में बहुत खूबसूरत लगते हैं और दोपहर के टाइम भी छाँव का इंतज़ाम करते हैं हमारे लिए। और मसला ये है कि बहुत कम है तादाद में, हमें चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि इसको और ज़्यादा बढ़ाएं और इनकी तादाद में इजाफा करें और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे पौधे लगाएं। शहरियों का कहना है कि ये दरख्त सिर्फ जीनत नहीं बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का जरिया भी है। ये गर्दो गुबार को जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन फ्राहम करते हैं और शदीद गर्मी के मौसम में ठंडी छाँव बांटते हैं। जब सूरज तप रहा हो और हवा भी थम जाए, ऐसे में अमलतास के जर्द फूल कसूर वालों के दिलों पर ठंडक का फाहा रखते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे महंगाई के हवाले से कि शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि 81% जो महंगाई है वो नीचे आ चुकी है। मरीम नवाज भी कहते हैं 71% जो महंगाई है वो नीचे आ चुकी है। अगर महंगाई नीचे आ चुकी है मिनाज साहब, तो लोग फिर बाहर क्यों जाते हैं? फिर पाकिस्तान में रहें, अच्छा है, हमारा अपना मुल्क है, अपनी मिट्टी है। आप ना इस प्रोग्राम के बाद बाहर निकलिएगा तो अपने घर के लिए सिर्फ सब्जी खरीदिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि महंगाई नीचे आई है या महंगाई ने जंप कर लिया है। आप सब्जी नहीं अफोर्ड कर सकते अपने घर के लिए एक दिन की, जितनी महंगाई यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त हुई है। तो आप आम गरीब आदमी कहाँ से जिंदगी गुजारेगा? मैं पिछले प्रोग्राम में भी यही कह चुका हूँ। एक गरीब आदमी के 5 बच्चे हैं, बीवी है, वो खुद है, ठीक है, 30,000 रुपये उसको आप सैलरी दे रहे हैं। सुबह का नाश्ते का उसका 1,000 रुपये का खर्चा है, बाकी सारा दिन पड़ा है जिसमें उन्होंने बच्चों ने खाना खाना है, बच्चों की फीसिस जानी है, उसने घर का किराया देना है। वो करप्शन ही होगी तो सर और क्या होगा? मुझे ये बताएं। करप्शन तो रोक नहीं सकती। करप्शन तभी रुकेगी, करप्शन तभी रुकेगी जब हमारी गवर्नमेंट हमको फैसिलिटेट करेगी। हमारी बिजली जो बिल्कुल नीचे लेके है उसके यूनिट, ठीक है, गैस को फ्री करे, गैस हमारी अपनी बात नहीं आती ना, गैस को फ्री करे, हमारे लिए बिल्कुल सस्ता कर दे, माइनर सा कर दे, ठीक है। पेट्रोल की फ्यूल की कीमत जो है ना वो कम करे, तो ऑटोमेटिकली आपके हालात जो है वो सर्वाइवल की तरफ आ जाएंगे। लेकिन ये करेंगे इस दौरे हुकूमत में ये वीजा अप्लाई करना आसान था, लोग बासानी बाहर जाते थे और इज्जत भी थी हमारी पासपोर्ट की। किसकी गवर्नमेंट? देखिए उस वक्त गवर्नमेंट थी हमारी, जो पहला टेनोर आया था ना इसका मियां नवाज शरीफ का, उस वक्त कोरिया बंदे भेजे थे हमने, ठीक है। कोरिया का रेट था भाईजान 1,54,000 रुपये, सस्ता रेट था। 1,54,000 रुपये मैंने बंदे भेजे, हम लेते थे 2.5 लाख रुपया, ठीक है। नेशनल बैंक की फीस थी, वहाँ फीस जमा होती थी, हम कोरिया की क्लासेस देते थे उनको, लैंग्वेज की, बंदों को बाहर भेजते थे, उसमें से हमें 50,000 लाख रुपया बचता था एक बंदे के पीछे। बहुत बड़ी रकम थी वो बचती थी। वो दौर था, उस वक्त लोग बड़े गए हैं बाहर। मियां नवाज शरीफ का जो उससे पहले तो सिर्फ सिवाय भुट्टो साहब के अलावा किसी ने इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं किया। ये उसके बाद जो गवर्नमेंट और आई, फिर अगर कोई गवर्नमेंट आई थी तो उसको उन्होंने रहने नहीं दिया। वो अब नाम लूंगा तो आपने वो चलाना नहीं है, वो नहीं बानी पीटीआई, हाँ पीटीआई की गवर्नमेंट, बानी पीटीआई अब मुल्क को एक तरफ ला रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे इंटरनेशनल लेवल पे, कंट्रीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते थे हमारे वीजे ऑन अराइवल करें, हमारे जो है ना पॉपुलेशन जो है ना ऑन अराइवल जाए, वहां पे जाके वर्क परमिट ले अपना काम करे। वो उसके बेचारे को बीच में रखे 3 साल, उसको कोरोना ने घुमाए रखा, कोरोना ने साथ नहीं दी। जब वो थोड़ा सा मुल्क को सीधा करने लगा तो उसको उठा के जेल में फेंक दिया। लेकिन ना मुखालिफिन तो उसके ये भी तो कहते हैं ना कि ये जो बाहर के हमारे ताल्लुकात अच्छे थे इन्होंने खराब किए हैं। अच्छे क्या थे? किसके साथ अच्छे थे? सबके साथ अच्छे किसी थे, के साथ भी अच्छे। अब इन्होंने जब बयानबाजी की, सारा कुछ किया तो सारा कुछ खराब हो गया। अब वीजा भी नहीं मिलता, कुछ मिलते ही नहीं है बाहर जाने के लिए। कोई आज सारी चीजें आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। अभी ट्रंप आ गया ना, तो ट्रंप ने डंडा दे के निकलवाना है। ये मेरी बात रिकॉर्ड कर लें आप। ट्रंप का क्या लिंक है? ट्रंप का बानी पीटीआई से जो लिंक है, ट्रंप का पर्सनल उसका एक रिलेशनशिप है, और ट्रंप को पता है कि ये बंदा जो है ना ये एक लीडर, जेन्युइन लीडर आदमी है, इसको हमने साथ लेके चलना है। और ट्रंप को वो भी लाइक करता है, ट्रंप उसको लाइक करता है। ये कंट्रियां हुकूमतें आपस में मिलेंगी तो हमारे लिए आसानियां पैदा होंगी। सर समझते हैं कि ट्रंप के आने से वीजा अप्लाई में फायदा होगा? पाकिस्तानी जो और लोग जाना चाह रहे हैं, उन्होंने पॉलिसी लूज की है अभी, ठीक है, अभी पाकिस्तान के लिए पॉलिसी उन्होंने लूज की है। कनाडा ने हमारे लिए वर्क परमिट निकाले हैं, 5 लाख बंदा कनाडा ने इंडिकेट किया है कि आप लोग हमारा मुल्क छोड़ दें जो ओवरस्टे हुए वहाँ पे, नए लोगों को आने का मौका मिले। तो नेपाल के लिए, इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश, उन्होंने कोटे निकाले हैं, हमारे लिए वर्क परमिट निकाला है, हम अप्लाई कर रहे हैं वर्क परमिट। नेपाल में मैंने सुना है कि गुर्बत है, नेपाल पाकिस्तान में जैसे हालात हैं वहां पे भी ऐसे ही सेम हालात ऐसे ही है? नहीं, नेपाल तो छोटा सा खिता है, नेपाल को मुल्क तो नहीं है ना, ठीक है। नेपाल में सारा कई बार घुमा हूँ। नेपाल एक्चुअली इंडिया का एक हिस्सा है, ठीक है। नेपाल बेसिकली इंडिया का हिस्सा है, इंडिया की ही वहाँ पे गवर्नमेंट है, इंडिया की मर्जी से वो चलता है। इंडिया उसको सिर्फ 6 घंटे बिजली देती है बस, सिर्फ 6 घंटे। आबादी कितनी है उसकी? आबादी उसकी होगी मेरे ख्याल में ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 करोड़ की आबादी होगी नेपाल। अच्छा, इतनी आबादी है। तो उसको सिर्फ 6 घंटे वो बिजली देता है। जो सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया में 1 लाख की बिक रही है, नेपाल में वही सुजुकी मोटरसाइकिल 6 लाख रुपए की है। उसकी वजह वो उनको दबा के इतना रखा हुआ कि ये हमारी अलावा सांस ही ना ये लें, बिजली वो दे रहा है, उसकी इकॉनमी वो चला रहा है, उसकी हर चीज वो कर रहा है। तो 6 घंटे जब बिजली देते हैं तो 6 घंटे में तो कुछ नहीं होता, आपको पता है, 6 घंटे गुजरते पता नहीं चलता। वो भी इंडिया देता है, उसके पास अपना है ही नहीं अफोर्डेबिलिटी के, वो खुद अपनी बिजली बना के बिजली ले